Hello. So let's begin the review of this second mock from time this year, which is AIMCAT 2524. So we will review the VARC section of it. So let's take a look at the first passage. When Charles Darwin published his magnum opus on the origin of species, he gave a convincing account of how, over immense periods of time, life has evolved from simple microbes to the richness and complexity of the biosphere we see today. So magnum opus means some kind of a grand work of any author, writer, singer, director. So जब उनका origin on the origin of species, so this is one of the biggest works of Charles Darwin. So he gave a convincing account of how over immense periods of time life has evolved from simple microbes. So life कैसे evolve हुई? Simple microbes के form में life ने जन्म लिया और उसके बाद में जो आज हम देखते हैं richness and complexity of biosphere. So in this origin of species, he covers this, but he pointedly left out an account of how life got going in the first place. One might as well speculate about the origin of matter, he quipped. तो अब इसमें लेकिन ऑथर कह रहा है कि उन्होंने लाइफ स्टार्ट कैसे हुई इसके बारे में बात नहीं करी कि लाइफ कहाँ से माइक्रोब्स से और क्या हो गई है आज, ये बात जरूर करी है उसने, ये बात की है उसने, बट हाउ डिड इट ओरिजिनेट ये बात नहीं की. और अब ये एक कोट दिया हुआ है उन्होंने उसका, वन माइट एज वेल स्पेकुलेट अबाउट द ओरिजिन ऑफ मैटर. तो इससे तो आदमी इफ वी ट्राई टू गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड, उसके बजाय इफ वी स्पेकुलेट अबाउट द ओरिजिन ऑफ मैटर दैट वुड बी वाइजर, ऐसा उसने बोला, इक्विप्ड. सो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से दैट it is very difficult to speculate or to find out how life began. So therefore he did not delve into it. 2 centuries later, we are still largely in dark about how life started. और ये जो बुक आई थी उसके 200 साल पहले भी बाद भी आज हमें क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई. So this first paragraph talks about what did Charles Darwin's origin of species actually cover and what it left out. There are really three puzzles rolled into one here: the when, where, and how biogenesis. So 3 pieces हैं puzzle के. When कब start हुई, कहाँ पे start हुई और कैसे start. So जैसे when did it start and where did it start and how did it start. Biogenesis means the beginning, genesis means origin of life. The when part at least is becoming clearer. After some academic skirmishes over the past decade, most biologists agree that the Pilbara Hills of Western Australia contain traces of life dating back nearly 3.5 billion years. So ये जो अर्थ है हमारी, अर्थ की लाइफ बोली जाती है around 4.5 billion years. That means the earth came into existence as we see it today 4.5 billion years back. So life first, as what they are saying, ये जो when part है ये थोड़ा clear हो गया कि कब begin हुई. तो हमें 3.5 billion years के पहले के traces of life मिले हैं यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में. Now focus of intense international research, the ancient rocks jet from arid hillsides in a wild and desolate terrain about 4 hours drive through the bush from the coastal town of Port Hedland. The evidence of life gathered so far includes fossilized microbial mats called stromatolites and tiny features embedded in rock, thought by many researchers to be microfossils. Recently, evidence has been found in the same region for an entire fossilized ecosystem. So, यहाँ पे ये बताया कि 3.5 billion years पहले के जो ट्रेसेस हैं हमें मिले हैं और अब काफी रिसर्च हो रही है यहाँ पे. और ये कहाँ पे है ये बताया कि ये कोस्टल टाउन है, वहां से 4 घंटे की ड्राइव पे, डेसोलेट मीन्स एकदम वाइल्ड में, और एक टेरेन है, एरिड ड्राई है, हिल साइड्स है, वहां पे ये मिला है हमें. और उसमें माइक्रोबियल मैट्स मिले हैं और जो कि माइक्रो फॉसिल्स है, राइट. तो फॉसिल्स बेसिकली वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट विच गेट buried and which become fossilized, right? They are found in the form of rocks. तो वहां से हमें जब उनको डेटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग से पता पड़ता है कि वो कितने पुराने. तो एविडेंस हमें मिली है वहां पे एंटायर फॉसिलाइज्ड इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम होता था वहां पे और वो फॉसिलाइज हो चुका. सो दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ टॉक्स अबाउट द व्हेन ऑफ बायोजेनेसिस, व्हिच मींस लाइफ कब स्टार्ट. तो वील जस्ट क्विकली रिकैप कि पहले पैराग्राफ में बात हुई थी कि चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जब लिखी थी तो उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है फ्रॉम अ सिंपल माइक्रोब से लेके अभी के जो कॉम्प्लेक्स बायोस्फीयर देख रहे हैं. लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, और उसके लिए उनके ये व्यूज थे कि rather उसके बजाय that means it could be a futile attempt trying to figure out how life got going, rather we can speculate about the origin of matter. तो आज भी हमें पता नहीं है लाइफ कहाँ पे स्टार्ट. ठीक है, नाउ व्हेन डिड इट स्टार्ट, इसका आंसर थोड़ा सा क्लियर हो गया है.
ये 3.5 बिलियन ईयर्स पुराने हमें फॉसिलाइज्ड कुछ इकोसिस्टम के फॉर्म मिले हैं इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. As to where life began, that is much more problematic. The Pilbara Hills provide the earliest clear traces of life on Earth, but there is no reason to suppose life actually started there. अब यहाँ पे ट्रेस मिल गया लाइफ के, तो इसका जरूरी नहीं कि यहीं पे लाइफ स्टार्ट हुई थी. It could have been brought there from somewhere else. Darwin himself mused about a warm little pond full of chemicals leached from the surrounding rocks and energized by sunlight. Various other types of primordial soup have been suggested by others, ranging from drying lagoons through suspended water droplets to the entire ocean. तो अब ये लाइफ कहाँ पे स्टार्ट हुई, ये क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की जा रही है. तो पिलबारा हिल्स में ठीक है ट्रेसेस ऑफ लाइफ मिले हैं, बट जरूरी नहीं कि वहां स्टार्ट हुई. तो डार्विन खुद ये सोचा करता था कि देयर इज अ वार्म लिटिल पॉन्ड फुल ऑफ केमिकल्स, जो कि सराउंडिंग रॉक्स से मिले हैं और उन्हें सनलाइट से एनर्जाइज किया गया है, तो यहाँ पे लाइफ हो सकती है. एंड ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ प्राइमोर्डियल मीन्स डेटिंग बैक, बहुत ही पुराना. सूप, सो दिस सूप इज बेसिकली व्हाट, सूप इज अ मिक्सचर, राइट. तो इस तरह का सूप इज अ लिक्विडी मिक्सचर. तो ड्राइंग लगून्स होते हैं जो वाटर बॉडीज और वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक. तो ये दोनों जो डार्विन है और जो अदर लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो वार्म लिटिल पॉन्ड्स होते हैं या सूप प्राइमोर्डियल सूप्स होते हैं, तो यहाँ पे लाइफ मिल सकती है, हो सकती है. इन ट्रूथ द सेटिंग इज प्योर गेस वर्क. तो ये लेकिन गेस वर्क ही है कि यहाँ पे लाइफ हो सकती है. This is just a guesswork. It is not clear that life even began on Earth. A good case can be made that it started on Mars, for example. Earth and Mars have for billions of years traded rocks blasted in space by comet and asteroid bombardment, and the surface of Mars is pockmarked with impact craters. तो ये कह रहे जरूरी नहीं कि लाइफ यहीं पे स्टार्ट हुई. ये जो कंडीशन बताई गई है यहाँ पे, हो सकता है कि हो, लेकिन जरूरी नहीं, ये गेस वर्क. तो मार्स पे हो सकता है स्टार्ट हुई. अब अर्थ और मार्स जो है यहाँ पे क्या होता है कि अब ये कॉमेट्स, बहुत सारे जो हेवनली बॉडीज होती है, जो कि कॉमेट्स होता है जैसे, या एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये इधर से उधर टकराते रहते हैं. तो मार्स के ऊपर देखेंगे तो उसके सरफेस पे बहुत सारे क्रेटर्स, दैट मीन्स बहुत सारे गड्ढे बने हुए, जब उन पे अगर कोई एस्टेरॉइड या कोई रॉक्स ने वहाँ पे इम्पैक्ट किया होगा. सिमिलरली अर्थ में भी है. तो मच ऑफ द इजेक्टेड मटेरियल गोज इनटू द ऑर्बिट अराउंड द सन. तो सपोज करो कि एक कोई रॉक या एस्टेरॉइड आके उसने मार्स के ऊपर लाइफ थी और वहां पे उसको इम्पैक्ट किया, तो देन द इजेक्टेड मटेरियल, वहां से जो मटेरियल निकला वो ऑर्बिट में आ जाता है अराउंड द सन, एंड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दैट इवेंचुअली हिट्स अर्थ, और फिर घूम फिर के वो अर्थ पे हिट करता है, परहैप्स आफ्टर अ मिलियन ईयर्स और मोर इन स्पेस. Over the course of geological history, trillions of tons of Martian material have drained down on our planet. तो इस तरह से ये देखा गया है कि जो जितनी भी हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसमें बहुत सारा मटेरियल मार्स से हमारे प्लैनेट के ऊपर गिर के आया है. इट इज बट अ स्मॉल स्टेप टू इमेजिन मार्शियन माइक्रोब्स हिचिंग अ राइड ऑन सम ऑफ दिस डेब्री. तो मार्शियन माइक्रोब जो है वो यहाँ पे इनके साथ में, ये जो डेब्री यहाँ पे हमारे अर्थ पे गिर रही है उसके साथ में लटक के राइड लेके यहाँ आ गए. Embedded deep within rock, protected from harsh conditions of space, a hardy microbe could easily survive the interplanetary journey, especially if it was a spore-like dormant state. तो अगर वो एक रॉक के अंदर है और वो रॉक जो है वो घूम रही है स्पेस में चारों तरफ, तो वो माइक्रोब सर्वाइव कर सकता है इंटरप्लैनेटरी जर्नी. Experiments have confirmed that microbes inside rocks can withstand space conditions, as well as blast off and subsequent high-speed entry into the Earth's atmosphere. तो जो माइक्रोब है वो रॉक के अंदर इतना ज्यादा एम्बेडेड है और वो रॉक सर्वाइव कर रही है, तो माइक्रोब भी सर्वाइव कर सकता है इंटरप्लैनेटरी जर्नी और जो अर्थ में इतनी हाई स्पीड एंट्री हुई, राइट. सो दिस पैसेज स्टार्टेड आउट बाय सेइंग दैट जो चार्ल्स डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थी, तो इसमें हमें ये पता चला कि सिंपल लाइफ थी, उससे अब कॉम्प्लेक्स कैसे हो गई है, लेकिन कहाँ पे स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, ये नहीं पता. तो नाउ व्हेन, वेयर एंड हाउ, इसमें से व्हेन पार्ट जो है वो क्लियर है, 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, और जो ट्रेसेस ऑफ लाइफ मिले हैं, लेकिन कहाँ पे स्टार्ट हुई ये क्लियर नहीं है. वो लास्ट पैराग्राफ में कवर किया गया, उसको बताया गया है कि इट कुड बी एज वेल कुड हैव स्टार्टेड इन मार्स, और मार्स पे माइक्रोब जो थे वो रॉक के अंदर एम्बेडेड थे, एंड देन दे वर ejected into the space, they survived the interplanetary journey and then hit Earth, and therefore life could have come from Mars. There is no clear cut conclusion drawn here, but it could be from Mars. So when and where, दो क्वेश्चन तो इन्होंने इसमें डील किए पैसेज में, हाउ को डील नहीं किया है कि कैसे स्टार्ट. So let's look at the questions. The primary purpose of the passage is to take the support of Darwin to speculate on biogenesis. Absolutely wrong. There is no speculation that has been done. Speculation means अंदाजा लगाना कि बायोजेनेसिस कैसे हुआ, हाउ तो आंसर ही नहीं हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत आंसर. Examine
when, where and how life formed on earth. तो देखो when और where ये तो एग्जामिन हो गया कि लाइफ कहाँ फॉर्म हुई, लेकिन हाउ ये नहीं हुआ है. So this could have been a probable answer. We can keep it still we can keep it because this comes near. Offer proof on the origin of life. There is no proof given here. उन्होंने तो सिर्फ स्पेकुलेट किया है कि हो सकता है मार्स से लाइफ यहाँ पे आई. So they have not given any proof. So this is wrong. Analyze possible answers to when and where life began. अब इसमें when तो पॉसिबल उन्होंने एनालाइज किया है, यस. वेयर भी किया है कि whether it is as per Darwin and others will say that it's a primordial soup or it's something else or it came from Mars. So ये एनालाइज कर रहे थे when and where life began. So this looks to be a little better answer than B. So I'm sure many of you would have got confused between B and D. And even I had to give a little harder look to both of these options. And then we would settle for D because एक तो इसमें how नहीं दिया, ठीक है, और where life formed on earth नहीं है क्योंकि earth पे ही नहीं है, right? Life in fact the theory is one of the theory is that life started on Mars and then it got transferred to the earth. So therefore this where it formed on earth, that also is not fully correct. Therefore we will eliminate B and we will go with D. Let's look at the next question. The primordial soup and the warm little pond. तो ये जो दो बातें की गई थी कि primordial soup है या warm little pond है, यहाँ पे लाइफ हो सकती है, तो ये क्या बोलते हैं? Are according to the author the most probable places where life might first have come into being. Now the problem with this option is that these two are not termed or terms given by the author. These two were given by, this was given by Charles Darwin. So let's take a look at it here. यहाँ पे इसने कहा है कि Darwin mused about a warm little pond and other suggested primordial soup. तो ये ऑथर के द्वारा दी गई टर्मिनोलॉजी नहीं है. Therefore this is wrong. According to the author it is wrong. Okay, this अगर if the option had been according to Darwin and others the most probable places where life might first have come, then it would have been a correct answer. But ये ऑथर के द्वारा नहीं है. Therefore this is wrong. Were according to Darwin and others conducive places on earth for life to form. This is okay, right? This is exactly what I mentioned. कि अगर आपको ऑप्शन 1 को करेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डार्विन एंड अदर्स लिख दोगे तो ये भी करेक्ट हो जाता है ऑप्शन. वही चीज उसने यहाँ पे मेंशन कर दी है. कंड्यूसिव प्लेसेस, मोस्ट प्रोबेबल प्लेसेस, एक ही बात है फॉर लाइफ टू फॉर्म विद दिस. तो ये दिस बिकम्स एग्जैक्टली द सेम, राइट? अगर आप यहाँ पे ऑथर हटा के और इन दोनों का नाम लिख दोगे, डार्विन अदर्स लिख दोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा. सो देयरफॉर दिस लुक्स टू बी अ करेक्ट आंसर. वील कीप इट. आर द मेटाफोरिकल इक्विवेलेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ? नो, देयर इज नो मेटाफोरिकल. मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर इज बेसिकली एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन वेयर व्हाट यू वांट टू कंपेयर यू so like suppose we say that it's a furnace outside, suppose it is very hot, we say it's furnace outside. तो हमने जो एक मेटाफर बना दिया वहां पे, फर्नेस तो नहीं है बाहर लेकिन गर्मी वैसी है, तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन करिए. तो यहाँ पे इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ से इसको कोई मेटाफर नहीं बनाया. दे हैव बीन सजेस्टेड एज अ प्रोबेबल प्लेसेस वेयर लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड, राइट? सो इसलिए ये गलत आंसर. आर प्लेसेस वेयर लाइफ फर्स्ट बस्ट फोर्थ स्पॉन्टेनियसली. अगेन this is not a conclusive thing. These are not the conclusive thing. These were just the probable or conducive places where life could form. Okay, so it doesn't mean that ये conducive है तो यहाँ पे हो गया था. Okay, so this is actually wrong. Correct answer is B. Okay, let's look at the next one. According to the passage, the case for life having started on Mars finds support in the fact that. तो Mars पे life start हुई, ये हम किस basis पे बोल सकते हैं? Among these four options, Mars more than Earth had conditions favorable for the genesis of life. देखो कंपैरिजन नहीं किया है, ये नहीं बोला है कि मार्स पे लाइफ से ज्यादा फेवरेबल, अर्थ से ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस. दिस इज नॉट व्हाट द ऑथर हैज मेंशनड हियर, राइट? सो वी विल नॉट गो विद दिस. दिस इज आउट. The two planets Earth and Mars have often exchanged matter in the course of cosmic activity. Yes, this has been mentioned that there have been rocks that have come from one and hit the other and the vice versa. So Earth and Mars have exchanged matter in the course of cosmic activity and therefore life could have originated in Mars and could have been transferred to Earth. So this is one of the options that supports this, right? So we can keep this. It is possible for microorganisms lodged in rock to travel safely through space and land on Earth. Yes, this also has been mentioned.
And microorganisms had, if you leave them alone, they cannot survive the space and the interplanetary journey. But then when they were lodged in a rock embedded, then they can survive. So this also has been mentioned. While Martian materials have rained on Earth, the reverse has not happened. Now this is irrelevant. कि Mars का material यहाँ पे आया, reverse has not happened. ऐसा भी नहीं है. So this is totally wrong. So we have 2 and 3. So let's look for the option that has 2 and 3, and we find that option here in the first instance itself. So A is the correct answer. Right? So I hope you get why A was a very clear answer here. This was a very simple question. As understood from the passage, Darwin did not write on how life began because. Now, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा. So we have to decipher this line. He pointedly left out an account of how life got going in the first place. One might as well speculate about the origin of matter. He quipped. तो हम जब ऐसा बोलते हैं कि यार ये करने से कि how life got going in the first place, इसके बारे में सोचने से तो बेटर है हम स्पेकुलेट करें, अंदाजा लगाएं कि origin of matter कैसे हुआ, matter कैसे origin हुआ. Rather, so we should not focus on the origin of life. That's what this means. कि हमें origin of life की बजाय हमें origin of matter के ऊपर फोकस करना चाहिए, because that is not really something that is going to yield any result. मतलब वो एक it doesn't have any futile exercise इसको बोलते हैं कि अगर हम लाइफ के ओरिजिन की बात करेंगे तो it will be futile to talk about that. So that's what this means. So let's look for such an option. He was more interested in how things evolved from the lowest form of life to the highest. ऐसा नहीं है कि he was more interested in this and he was less interested. कोई comparison नहीं किया गया उसके interest का. Therefore, this is wrong. It is something we are yet to decipher 200 years hence. Yet to decipher. So, see, this is totally irrelevant and useless option because हमें डार्विन के बारे में बताना है, उसने क्यों नहीं किया. अभी लाइफ अभी 200 साल के बाद भी इसका आंसर नहीं है, उससे कोई लिंक नहीं है इसका. तो easily ruled out. He considered finding an answer to that question as difficult as finding out about the origin of the matter. Okay, this may not be a perfect answer, but we can keep it. He had been called upon to write only on biological progression. ऐसा कहीं नहीं है कि वो जो origin of species वालों ने उसको कहा था कि आप सिर्फ biological progression के ऊपर लिखो, आप origin of life के ऊपर मत लिखो. ऐसा तो नहीं है. तो this is easily ruled out. तो हम 3 को eliminate कर देते हैं easily and we come to the answer. Though it is not a 100% correct answer as per me. He considered finding an answer to the question or it's as a futile exercise. That would have been a better answer here. He thought it rather we should speculate on origin of matter. So we might as well speculate on origin of matter. That means कि इसके बारे में हम बात करें तो ज़्यादा better है. तो ठीक है, you can still say that this also is. I mean, he considered this to be an easier problem than finding out how life originated. So that is also another way to decipher this. So in any case, this looks to be the best option among these 4, and therefore we will go with C. Though this is not an optimum answer, I would say. All right. So I hope this passage and the associated questions are clear. Let's move to the next passage. Okay. Second question. Is your company the hub of a network of partners that don't interact with one another? If so, you may well be well positioned to produce radical innovations, but you could be on your own if trouble strikes. Or are you a part of a web of interconnected allies? Then you may be limited to incremental innovations, but you'll probably be much less isolated during crisis. तो अब ये जो passage है, this deals with 2 kinds of network of partners. Okay, one is basically where you are the hub of network of partners. Hub and spoke model होता है. Hub and spoke. That means this is the hub and this is the spoke. So let's say ये कोई company है. This is a company and these are the partners. This is partner 1. This is partner 2. This is partner 3. This is partner 4 and this is partner 5. तो वो कह रहा है कि अगर आप इस तरह की कंपनी हो जहां आपके पार्टनर के साथ में आपका इस तरह का रिलेशनशिप है, देन यू आर वेल पोजीशन टू प्रोड्यूस रेडिकल इनोवेशंस. तो आप एक बहुत रेडिकल इनोवेशंस प्रोड्यूस कर सकते हो. लेकिन अगर प्रॉब्लम हो गई तो आप अकेले हो. ठीक है, नोबडी कैन कम टू योर हेल्प. बट इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ वेब ऑफ इंटरकनेक्टेड अलाइज, अब आप अगर एक इस तरह की चेन में हो कि यू आर द कंपनी हियर, ठीक है, देन यू हैव अ P1 पार्टनर हियर, देन ये इंटरकनेक्टेड, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया और इस तरह से हो. अगर आप इंटरकनेक्टेड हो तो आपको एक इंक्रीमेंटल इनोवेशन नहीं होंगे, लेकिन आप यू विल बी मच लेस आइसोलेटेड ड्यूरिंग क्राइसिस. तो अगर क्राइसिस आया तो आप अकेले नहीं पड़ जाओगे. तो ऐसे 2 उन्होंने अलग अलग पार्टनर मॉडल बताए. तो अब इसके बारे में लेट्स लुक एट इट इन डिटेल.
In 12 years of research, we've learned which kinds of alliance networks are best for which type of firms and how you can tailor your network to suit your strategy, position, and business environment. Consider the alliances formed by Samsung and Sony with suppliers, sales channels, and R&D partners from 2008 to 2011. तो अब इन्होंने दो कंपनियां ली हैं. इन्होंने ये कहा है कि आप किस तरह के अलायंस नेटवर्क्स यू हैव, वो डिपेंड करता है कि आपकी फर्म किस टाइप की है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट. तो अब दो कंपनियां ली हैं. सी दिस इज अ लिटिल ओल्ड पैसेज. ओके, ये पैसेज अभी बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है. So many times I keep saying that they keep giving in these times, especially keep giving old passages in mocks. They recycle the passage, not recycle the passages. So sometimes the questions and the passages are not very relevant and in tune with the questions that are being asked and the passages being given in CAT. ठीक है, however, whatever it is, let's go ahead with this now. तो सैमसंग और सोनी दो टाइप के कंपनियां हैं. तो इनके सप्लायर्स, सेल्स चैनल्स और R&D पार्टनर्स के साथ में 2008 और 2011 से कैसे कैसे अलायंसेस से वो बताएं. ठीक है, पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं आपके? सप्लायर्स हो सकते हैं, सेल्स चैनल हो सकते हैं, R&D पार्टनर. Samsung is at the center of its network, a vantage point from which can combine insights from such diverse partners as VARC and KT. We do interesting things with 3D technology, but don't typically work together. तो Samsung बताया गया है कि is like a hub and spoke. कि Samsung यहाँ सेंटर पे बैठा हुआ है और उसके ये पार्टनर्स ड्रीमवर्क्स एक्सेट्रा, केटी वेटी यहाँ पे, तो उनके जो भी इनोवेशन हो रहे हैं उसका ये फायदा होता है. Like Apple, which invented the iPhone after gleaning insights from Motorola and other disparate other partners, Samsung is well placed to look into the future and conceive a breakthrough product, perhaps the first handheld device for watching 3D movies without special glasses. But it risks the isolation experience by another hub firm, Boeing, whose network did not foster the deeply integrated relationships needed to tackle manufacturing problems on its innovative 787 Dreamliner and to avoid product launch delays. तो ये कह रहा है कि अब इन्होंने एग्जांपल दिया एक और कंपनी का, बोइंग, जो कि एक इसी तरह के नेटवर्क पार्टनर्स के साथ में, अलायंस के साथ में काम करती थी, लेकिन व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग देन इट एक्सपीरियंस आइसोलेशन बिकॉज देयर वाज नो डीपली इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप्स with the alliance network partners and therefore they could not tackle the manufacturing challenges. तो इस वाले पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि किस तरीके से सैमसंग यूज करता है अपने पार्टनर्स के इनोवेशंस से, खुद भी इनोवेट करता है, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम में आ जाए तो मुश्किल हो जाएगी. सेम एक्सपीरियंस दे हैव गिवन with the help of another example of Boeing. Sony is a part of web of allies including Sharp and Toshiba that work with one another. अब ये जो सोनी है, ये अब इसके जो पार्टनर्स हैं इनके साथ में इसका एक इस तरीके का मॉडल है जहाँ पे ये सब एक दूसरे इस तरीके से कनेक्टेड. Although highly integrated networks like this one are less likely to yield breakthrough innovations, they have a big advantage on other front. Their members often reach out to partners in need. For example, after the March 2011 earthquake in Japan, customers and suppliers of Renesas Electronics sent 2,500 workers to help rebuild a damaged plant. तो यहाँ पे इस तरह के उसमें अब कोई बहुत इनोवेशन सपोज इसका हो रहा है तो वो जरूरी नहीं कि आपके पास तक पहुंचे. राइट, अगर आप यहाँ पे हो और इनोवेशन यहाँ हो रहा है तो आपके बीच में बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे इसने इनोवेशन किया तो आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाएगा. बट लेकिन यहाँ पे इसमें ये है कि अगर एक कुछ क्राइसिस आ गया तो ये एक दूसरे को हेल्प कर लेते हैं. तो उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है. तो दो पैराग्राफ हो गए. दोनों पैराग्राफ में उसने एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया कि किसमें हब वाला चलता है और किसमें वो इंटीग्रेटेड नेटवर्क वाला चलता है. In a fast changing environment, it is crucial to be at the center of a hub and spoke network so that you are constantly exposed to new ideas. Firms in dynamic industries had higher return on asset if they were part of this type of network. Highly diversified firms gain a lot from being hubs because employees with different backgrounds can see more opportunity in diverse ideas coming from spokes. तो अब ये बताया गया है कि किस तरह की कंपनियां में ये अच्छा काम करता है हब एंड स्पोक, विच इज अ फास्ट एनवायरमेंट, फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जहाँ पे होती है वहाँ पे कंपनी इस तरीके के नेटवर्क का फायदा उठा सकती हैं. एंड ऑल्सो वहाँ पे एम्प्लॉयज आते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, तो काफी अपॉर्चुनिटी है. इंटीग्रेटेड नेटवर्क कैन बी पर्टिकुलरली बेनिफिशियल कंपनीज हुज स्मॉल साइज लीव्स देम वल्नरेबल टू शॉक्स. तो अब जो छोटी कंपनी है काफी वल्नरेबल है शॉक्स, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो चैलेंज हो जाएगा. तो ऐसी कंपनियों के लिए इंटीग्रेटेड नेटवर्क बेटर होता है. With either type of network, a company must ensure that information about partners flows freely so that an executive managing a relationship with one partner knows what others are learning from different partners. तो किसी भी तरह के नेटवर्क में इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो होनी चाहिए ताकि कोई भी अगर सीईओ है, एग्जीक्यूटिव है, तो एक पार्टनर से रिलेशनशिप मैनेज कर रहा है, वो समझ सके कि दूसरे से वो क्या लर्निंग्स हो रही है. राइट, तो इसमें इस वाले पैराग्राफ में बता दिया आपको कि किस तरीके से अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरह के नेटवर्क्स ज्यादा अच्छे सूटेबल होते हैं, किस तरह की कंपनीज को किस तरह के नेटवर्क में जाना चाहिए. Our analysis suggests that Sony, large, diversified and fast-changing industry, would be better off with a hub-and-spoke network like Samsung. तो अब सोनी जो है वो लैगार्ड है, बड़ा स्लोली इनोवेशन करता है. सैमसंग बहुत क्विकली करता है. सोनी का तो हमें पता है कि स्मार्टफोन्स और ये सब तो खत्म ही हो गए. टेलीविजन भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है. उसका जो एक टाइम पे जो मेजोरिटी शेयर होता था,
तो सोनी जो है वो फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री में इट कुड हैव बीन बेटर ऑफ विद हब एंड स्पोक नेटवर्क. The difference in network structure is one reason Samsung has outpaced Sony in creating innovative products. So this is one of the reasons. Many companies fail to look beyond their own partner relationship to consider whether their partners are interacting with one another. This prevents them from gaining the greatest possible competitive advantage from their alliance. कई कंपनी जो है वो अपनी पार्टनर रिलेशनशिप पे फोकस करती हैं. They fail to look at the relationship between the partners or whether the partners are interacting with one another. अगर आपको ये सब चीजें हो, अगर आप करो, तो you can really gain competitive advantage from their alliances. So this passage talks about two kinds of partnerships, alliance networks. तो अलायंस नेटवर्क किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है. उसके सप्लायर्स होते हैं, उसके R&D पार्टनर्स होते हैं, उसके चैनल पार्टनर्स होते हैं, राइट. सो इसमें बताया गया है कि सोनी का जो मॉडल था दैट वाज नॉट रियली कंड्यूसिव फॉर दिस फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड देयरफॉर सोनी बिकेम लैगार्ड एंड सैमसंग आउटपेस्ड सोनी. सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. Which of the following is possibly true based on analysis cited in the penultimate passage? Penultimate means the second last passage, paragraph. Second last paragraph. तो second last paragraph में क्या बताया? ये जो एनालिसिस किया है कि सोनी जो है ये फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री में है, तो इसको बेटर ऑफ हब एंड स्पोक नेटवर्क से होगी. सोनी नीड्स रिस्क एवर्जन मोर देन इट नीड्स ब्रेक थ्रू इनोवेशन. देखो, रिस्क एवर्जन इज नॉट व्हाट हैज बीन स्पेसिफाइड देयर. उसने कहा है कि सोनी को तो ब्रेक थ्रू इनोवेशन चाहिए. इतने फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में सोनी को ब्रेक थ्रू इनोवेशन चाहिए, उसके लिए उसको हब एंड स्पोक चाहिए पार्टनर. सो ये बिल्कुल गलत है. सोनी डजंट हैव इनफ डाइवर्सिटी टू एंश्योर इट विल नॉट सफर द प्रॉब्लम्स बोइंग सफर्ड. ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि सोनी डजंट हैव डाइवर्सिटी. सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. Sony can compete with Samsung only if it develops deeply integrated partnerships. Now this is a problematic thing here. तो Sony can compete with Samsung. First of all, competition जो है वो किस फॉर्म में? There are many ways in which firm can compete. वो नहीं बताया वहाँ पे. उसमें सिर्फ ये बताया कि सोनी से ज्यादा स्मार्ट जो सैमसंग ने उसको आउटपेस कर दिया. एंड ओनली इफ इज द रॉन्ग वे. दिस इज एन एक्सट्रीम आंसर. ठीक है, क्योंकि इसमें see, if you say that this is one of the ways, this is the way in which Sony can compete with or it can come alongside Samsung, it doesn't mean that is the only way. There could be other ways also. एक पैसेज में अगर कोई एक पॉइंट डिस्कस हो रहा है या एक बेनिफिट बताया जा रहा है, तो it doesn't mean that that is the only way. There could be many other ways unless it is specified in the passage, which is not. Therefore, this is a wrong answer. Sony needs radical innovations more than incremental ones in the current situation. Yes, this is exactly what has been mentioned. कि उसको जो है वो हब एंड स्पोक नेटवर्क में आ जाना चाहिए, वहां पे रेडिकल इनोवेशन ज्यादा होता है. सो दिस डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज फॉर हब एंड स्पोक नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द पैसेज? जो हब है यहाँ पे जो बैठा हुआ है, तो ये हब एंड स्पोक टाइप के नेटवर्क में इसको क्या एडवांटेज होता है, राइट? तो हमने देखा ही था, इसको एडवांटेज यही होता है कि बाकी सारे पार्टनर्स जो है यहाँ से वो इनोवेशन लेके आ जाता है. So, growth opportunities for employees from diverse firm in dynamic industries. So, growth opportunities for employees नहीं बोला. Employees का reference जरूर है, but in a different sense. उसने कहा कि employees with different backgrounds जो आ जाते हैं, तो they see more opportunities in diverse ideas coming. It doesn't mean that कि employees के लिए growth opportunities. So this is wrong. A vantage point to combine insights and diverse ideas from a disparate group of partners. Yes, vantage point means a point that gives you an advantage. So जहां पे आपको बैठ के एडवांटेज मिलता है, that is called a vantage point. तो आप उस vantage point पे बैठे हो जहां पे you can get insights and diverse ideas from a disparate group of partners. So definitely this is an advantage for a hub guy. So we can keep this. Competitive advantage because of alliance partners constantly engaging with each other. Competitive advantage because of alliance partners constantly engaging with each other, ऐसा नहीं बताया गया वहां पे. तो ये बताया गया कि alliance partners को भी आपस में engage करते रहना चाहिए, और you should be knowing whether the alliance partners are engaging with each other or not, and then you will get the benefit. So just because alliance partners are constantly engaging with each other and you are not aware, that will not give you that advantage. जैसे देखिए यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि a company must ensure that information about partner flows freely so that an executive managing a relationship with one partner knows what others are learning from different partners. So whether a partner is engaging with the other partner is immaterial unless you basically know that thing, right? You should know that. If you know that, then it is fine. So this is wrong. This competitive advantage because of their being constantly engaging with each other is wrong. Assistance from deeply integrated networks to tackle manufacturing problems. Now this is not correct. ये जो बताया गया है ये deeply integrated networks के लिए बताया गया है, not in
hub and spoke network. So this is also the correct answer is B. The author mentions the March 2011 earthquake to highlight which of the following point. तो ये हम याद कर लेते हैं. March 2011 earthquake बताया गया था सोनी के रिगार्ड में कि वहां पे जब अगर तो जैसे 2011 मार्च में earthquake आया था तो कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ऑफ नहीं सोनी की नहीं सॉरी ये जो रेनासास इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इन्होंने 2500 वर्कर भेजे थे इसके डैमेज प्लांट को रीबिल्ड करने के. मतलब ये रेनासास इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी उसके जो कस्टमर्स थे और सप्लायर्स थे उन्होंने 2500 वर्कर्स भेजे थे इनके प्लांट को रीबिल्ड करने के. राइट. सो देयरफॉर इन द इंटीग्रेटेड नेटवर्क when a problem arose then the partners so customers and suppliers are partners so they helped this company out. So ये example बताया गया. So integrated networks ensure companies aren't left high and dry. High and dry means isolated without any help during precarious times. तो मुश्किल टाइम पे अकेले ना छूट जाओ आप. ये आपको इंटीग्रेटेड नेटवर्क से फायदा मिलता है. तो ये तो सही बात है. वी कैन कीप दिस. Sony's decision to choose hub and spoke over a web of interconnected paid dividends ये तो बिल्कुल ही उल्टा है. Right? Sony never chose hub and spoke. In fact, it is being recommended. The alliance network a company chooses can be tailored to suit strategy and business development. That is okay. That is okay. But this is not the reason for this particular March 2011 earthquake example. The alliance company can be tailored to suit strategy and business development. That is not the idea. The idea here is to tell you कि interconnected network अगर होता है तो आप मुश्किल में फंस जाओ तो आपके partners आपको help कर सकते हैं. So this is not correct. Corporations which are part of alliance network can beseech partners for assistance during crisis. Now, corporations which are parts of alliance networks तो दोनों टाइप के हो गए. So दोनों टाइप के नेटवर्क वाले थोड़ी पार्टनर्स के पास. beseech means seek help. तो ये हब एंड स्पोक वाले थोड़ी करते हैं. ये तो इंटीग्रेटेड वाले करते हैं. तो अलायंस नेटवर्क तो दोनों होते हैं. So therefore this is wrong. This is distortion. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा. Which of the following best summarizes the difference between Samsung and Sony as explained in the passage? तो Samsung और Sony में क्या फर्क है? क्लियर है. एक हब एंड स्पोक वाला है दूसरा इंटीग्रेटेड वाला है. Sony's alliance network of disparate partners allows it to be more innovative. बिल्कुल झूठ उल्टा बोल रहा है. Samsung's alliance network offers it a better cushion than that of Sony during a crisis. बिल्कुल झूठ बिल्कुल उल्टा है रिवर्स है. Samsung's hub and spoke network makes it more innovative than Sony, but increases its fragility during a crisis. Yes, looks fine. Sony's hub and spoke network with companies like Toshiba and Sharp make it better suited. Sony का hub and spoke नहीं है, झूठ है. Correct answer is C. So passage was easy. I don't think there was any question that was challenging in this. इसमें थोड़ा सा समझने की बात थी. तो passage easy था. We should have done this. So if you look at the two passages so far, I would have recommended doing this one. Maybe first वाला passage आप बाद के लिए छोड़ सकते थे. Second passage was a very easy passage. I think you should have got 4 out of 4, or if not 4, at least 3 तो आपको इसमें आने चाहिए था. Let's go to the third passage. So let's look at this passage. The music that accompanied industrial decline in Western industrialized nations articulated two distinct responses to the foreclosure of empowerment and idealism that the counterculture of 1960s had nurtured. तो इंडस्ट्रियल डिक्लाइन हुआ था वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में. तो उस टाइम पे जो म्यूजिक था, ठीक है, तो देयर वर टू डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सेस थे उसमें टू द फोरक्लोजर ऑफ एम्पावरमेंट एंड आइडियलिज्म दैट द काउंटर कल्चर ऑफ 1960s had nurtured. So काउंटर कल्चर आया था 1960 में. ठीक है, तो उसमें जो एम्पावरमेंट और आइडियलिज्म मिलती थी उसको फोरक्लोजर कर दिया गया. ठीक है, उसको फोरक्लोजर को 2 रिस्पॉन्सेस दिए गए. So let's look at decode this particular sentence. It says कि जो म्यूजिक आया था इंडस्ट्रियल डिक्लाइन के टाइम पे उसमें 2 रिस्पॉन्सेस दिए गए थे. तो लोगों का जो एम्पावरमेंट और आइडियलिज्म कम कर दिया गया था, उसके अगेंस्ट 2 रिस्पॉन्सेज मिले थे. दैट मीन्स पीपल वर गेटिंग लेस एम्पावर्ड, तो उसके अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स था, 2 रिस्पॉन्स थे. तो एक आया डिस्को से. डिस्को विथ इट्स इलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स, एक्सिबिशनिस्ट फोकस ऑन डांस एंड अटेंडेंट ड्रग कल्चर represented a turning away from political challenges, a refusal to deal with social problems and a desire for momentary pleasures. So this is one way in which, so you can say kind of rebellion. उसमें कॉस्ट्यूम्स थे, डांस था, ड्रग कल्चर था.
तो हम उस चीज को सोशल प्रॉब्लम से रिफ्यूजल कर रहे थे, पॉलिटिकल चैलेंज। तो क्या स्टेटमेंट बनाए दिए जा रहे थे, राइट? व्हाट वर द स्टेटमेंट्स बीइंग मेड विद डिस्को इज बेसिकली बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर। पंक दूसरा टाइप का म्यूजिक था। On the other hand, was a howl of rage from working class youth who saw and rejected in no uncertain terms the hypocrisy of social establishment and increasing inaccessibility of economic opportunities for the socially economically disadvantaged, socio-economically disadvantaged। और दूसरी तरफ पंक था जो म्यूजिक फॉर्म, वो एक तरह से हाउल ऑफ रेज था। दैट मींस इट वाज एन आउटरेज, गुस्सा था वर्किंग क्लास यूथ का कि जो सोशल एस्टैब्लिशमेंट की हिपोक्रेसी है और हमारे को जो वर्किंग अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, ठीक है, टू द सोशली सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, उसके अगेंस्ट इनका एक ये रिबेलियन था। ओके, सो टू फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सेज बताए गए हैं। एक था डिस्को। डिस्को में जो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स वर, ये इग्नोर कर रहे थे चीजों को। ओके, रिफ्यूजल टू डील विद सोशल प्रॉब्लम्स, टर्निंग अवे फ्रॉम पॉलिटिकल चैलेंजेस, कि हमको it doesn't really matter to us and we are only involved in momentary pleasure, और ड्रग कल्चर आया था। पंक में एक तरह से गुस्सा था कि जो हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, जो सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोग हैं, तो उनका एक तरह से गुस्सा आया बाहर। तो इस तरह से दो रिस्पॉन्स बताए गए। डिस्को वॉज स्टीरियोटिपिकली आइडेंटिफाइड विद अफ्रो अमेरिकन परफॉर्मर्स, albeit predominantly white consumers, whereas punk was typed as a British phenomenon. Although, in fact, both musical constituencies can be found in any of the wealthy nations that were starting in the 1970s to wrestle with deindustrialization, wage stagnation, and corporate restructuring, now known as outsourcing. तो अब ये बताया कि डिस्को जो था ये प्राइमरीली अफ्रीकन अमेरिकन मीन ब्लैक परफॉर्मर्स होते थे, लेकिन उसको कंज्यूमर करना है उसके वाइट ही होते थे, और पंक एक ब्रिटिश फिनोमेनन। जबकि दोनों ही किसी भी वेल्दी नेशन में मिलेंगे आपको 70s में, क्योंकि 70s में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, आउटसोर्सिंग शुरू हो गई थी। तो एज वी नो that many jobs were outsourced, right, during 70s, 80s, 90s, a lot of jobs came to India and other developing countries. तो इसके अगेंस्ट में these people were rebelling, right? तो डिस्को और पंक दो टाइप के म्यूजिक फॉर्म बताए गए यहाँ पे, which were kind of statements against all the social problems that were prevalent in the deindustrialization or decline of industrialization in the Western nations. So that's the crux of the first paragraph. Elements of both these musical responses to social marginalization and injustice are synthesized in hip hop, the most popular musical form for expression of protest worldwide in the following period. तो उसके बाद में अब जब हिप हॉप करके जो म्यूजिकल फॉर्म है, जो कि एवरीबडी नोज वेरी वेल नाउ, दिस जनरेशन नोज इट वेरी वेल, तो जो डिस्को और पंक के जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्स थे सोशल मार्जिनाइजेशन, इंजस्टिस को, वो हिप हॉप में आ गए हैं। और this is a form of protest now worldwide. Sociologist Tricia Rose theorizes the hip hop universe of a youth as emerging from a post-industrial nightmare in which ethnic poor were being crowded out of public space, and creative protest was fostered in the effort to reclaim for the people the neighborhood that were being torn apart to build expressway into the city for affluent suburban commuters. तो अब ये त्रिशिया रोज जो है, ये एक सोशियोलॉजिस्ट है। इन्होंने जो हिप हॉप यूनिवर्स ऑफ आवर यूथ है, इसको एक तरह से थियोराइज किया है, इसकी थियोरी बताइए कि ये पोस्ट इंडस्ट्रियल नाइटमेयर था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उसके बाद का फेज है, डिक्लाइन चल रहा है। एथनिक पुअर लोग हैं जो मतलब जो बेसिकली लेट्स से ब्लैक्स हैं, और ये एथनिकली जो बाहर से हिस्पैनिक्स वगैरह हैं, पुअर लोग हैं, इनको पब्लिक स्पेस से निकाल के बाहर किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे थे। तो जब एक्सप्रेसवेज बनते हैं या ये बनते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है मैसिव लेवल पे, यू मे हैव सीन कि स्लम्स आर demolished and a lot of space where these people, poor people reside, they are taken away. And therefore this hip hop was a kind of creative protest कि हमें वो जो नेबरहुड्स हैं जो हमारे से छीने जा रहे हैं, तो हमें उन्हें रिक्लेम करना है। सो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो सेकंड पैराग्राफ इसमें ये बताएगा कि ये जो डिस्को और पंक के फीचर्स थे वो आ गए हिप हॉप में, और हिप हॉप इज बेसिकली काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट का एक तरह से सिंबल बन गया है। और इट इज़ बिकॉज की जो इंडस्ट्रियल डिक्लाइन में गरीब लोगों को जगह नहीं मिल रही थी और उनके जगह छीनी जा रही थी, एक्सप्रेसवेज बन रहे थे अफ्लुएंट कम्यूटर्स के लिए, तो इनका ये स्टेटमेंट था कि हमें वापस मिले। Into this unacknowledged war on the poor and marginalized came the interplay of technology, economics, and culture at the origin of hip hop. What Rose describes as a practice of appropriating cultural refuse for pleasure. तो ये जो अब ये एक तरह से वॉर था on the poor and marginalized, एक तरह से unacknowledged means though it was not really a war, but it was kind of war on the poor और marginalized लोगों की इनकी जगह छीनी जा रही थी।
तो इस टाइम पे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और कल्चर का इंटरप्ले आया, ओरिजिन ऑफ हिप हॉप, ठीक है। और रोज में इसको कहा है कि हम कि दैट वाज लाइक अप्रोप्रिएटिंग कल्चरल रिफ्यूज फॉर प्लेजर। तो जो कल्चर ने जिसे रिफ्यूज कर दिया है जिस चीज को, उसको इन्होंने अडॉप्ट किया प्लेजर के लिए। इस तरह से इसने कुछ स्टेटमेंट दिया। द एलिमेंट्स ऑफ फ्लो, लेयरिंग एंड रप्चर बोथ रिफ्लेक्ट एंड कॉन्टेस्ट सोशल मार्जिनलाइजेशन, रोज सेज. In its origins, the music was both articulating and symbolizing the lived experience of people struggling to hold on to a community identity in the face of urban development and gentrification processes. तो ये जो एलिमेंट्स थे उसके हिप हॉप के, फ्लो, लेयरिंग और रप्चर, दे रिफ्लेक्ट एंड कॉन्टेस्ट सोशल मार्जिनलाइजेशन. तो ये सोशल मार्जिनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है गरीब लोगों के, एथनिक लोगों के अगेंस्ट, तो ये उसको कॉन्टेस्ट कर रहा था कि जिस तरीके से हिप हॉप डिजाइंड, हिप हॉप की जो लेयरिंग है, फ्लो है उसका, रप्चर, तो ये वो रिफ्लेक्ट करता है, कॉन्टेस्ट करता है सोशल मार्जिनेशन. इन इट्स ओरिजिन म्यूजिक वाज आर्टिकुलेटिंग एंड सिंबलाइजिंग द लिव्ड एक्सपीरियंस. और म्यूजिक जो था वो लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस को सिंबलाइज कर रहा था, टू स्ट्रगल टू होल्ड ऑन टू कम्युनिटी आइडेंटिटी. कि ये जो अर्बन डेवलपमेंट चल रहा है, जेंट्रिफिकेशन प्रोसेस चल रही है. जेंट्रिफिकेशन मतलब सबको, जेंट्री जो होती है, राइट, सो जेंट्री बेसिकली द, जैसे गेटेड जेंट्री, राइट, अगर जो अच्छे सोसाइटीज बन रही हैं, वेरी वेरी वेल्दी पीपल लिव देयर, सो दैट इज ऑल कॉल्ड जेंट्रिफिकेशन. तो अर्बन डेवलपमेंट और जेंट्रिफिकेशन के नाम पे इन लोगों की आइडेंटिटी छीनी जाएगी. The struggle, she insists, was not a final futile gesture of victims of urban apocalypse, but was the formation of an alternative communally forged identity by producers of a conscious take back the public spaces movement. It was an intransigent, unapologetic assertion of the rights of all human beings to take up public space, to interact with each other, and with the music that informed these politicized, reclaimed spaces. तो ये जो स्ट्रगल थी, ये कोई फ्यूटाइल जेस्चर नहीं था. अर्बन अपोकैलिप्स मीन्स द एंड, बट वाज द फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिवली कम्युनिटी फोर्ज्ड आइडेंटिटी. तो ये एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हुई थी, ठीक है. और इसमें ये लोग कह रहे थे टेक बैक द पब्लिक स्पेसेस मूवमेंट, वी वांट आवर पब्लिक स्पेसेस बैक. और इट वाज intransigent means hostile, fighting, unapologetic assertion of rights of human beings to take public space और आपस में इंटरेक्ट करें. एंड म्यूजिक दैट इन्फॉर्म मींस इन्फ्लुएंस्ड दीस politicized reclaimed spaces. So इसमें हमें बहुत अभी see any passage that we read, we don't need to understand each and every line to the greatest of depth. Okay, जितना हमें समझ में आ रहा है उसका मोटा मोटा हमें मेन आइडिया समझना है. तो इस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया ये बताया गया है कि किस तरीके से डिस्को और पंक जो आए थे उसके एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट हुए हिप हॉप में. And this came at a time when, because of industrial decline, the lot of these ethnic poor people, they felt that their spaces were being snatched from them, public spaces were being snatched from them, and therefore they wanted to, they used hip hop to show their kind of protest and contest this social marginalization. इसके अगेंस्ट जो था, तो जिस तरीके एलिमेंट्स थे उसमें हिप हॉप में, वो उस चीज को एग्जिबिट कर रहे थे. एंड ऑल्सो जो इनकी एक आइडेंटिटी थी वो एक ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी बनने की कोशिश की जा रही थी कि टेकिंग बैक द पब्लिक स्पेसेस, दैट वी हैव राइट टू टेक बैक द पब्लिक स्पेस, इंटरेक्ट विद ईच अदर. और इस तरह का म्यूजिक उन्होंने बनाया. मच ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ इनजस्टिस दैट इज एक्सप्रेस्ड म्यूजिकली इन द अर्ली 21st सेंचुरी इज डन सो थ्रू हिप हॉप. तो ये जो प्रोटेस्ट होता है इनजस्टिस का, ये वो बेसिकली हिप हॉप के थ्रू होता है. देयर इज फॉर इंस्टेंस अ हंगेरियन रैपर बाय द नेम ऑफ Dope Man who performs his discontent with the political homogenization of the country's post-communist regime. And in Haiti, there was a nationwide rap contest in June 2006, the Concours pour l'amour, in which young people submitted original rap on the topic of cleaning the environment, and nation voted for their favorite recording made by 12 fans. तो अब यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस तरीके से इनजस्टिस के अगेंस्ट में म्यूजिकली हिप हॉप आया है उठ के. हंगरी में एक रैपर है, उसने अपना जो डिसकंटेंट है कि पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम के बाद में जो ह्यूमनाइजेशन हुआ उसके अगेंस्ट डिसकंटेंट परफॉर्म किया उसने. हाइटी एक जो आइलैंड है वहाँ पे एक रैप कॉन्टेस्ट हुआ जहाँ पे लोगों ने अपने क्लीनिंग अप एनवायरनमेंट, ऐसे सोशल इश्यूज और कॉजेस के ऊपर अपनी म्यूजिक सबमिट किया, रैप्स. But the resonance that the hip hop has for youth in many different cultures should not blind us to the diversity of music, traditional and improvised, through which justice appeals speak to people. The discussions in this section should therefore be read not as a comprehensive overview, but as a selection of examples that showcase the diversity of musical style that are speaking justice around the world. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हिप हॉप का जो रेजोनेंस है, the way it goes with the youth and different cultures, should not suggest that कि ये
डाइवर्सिटी ऑफ म्यूजिक जो है वो नहीं है, शुड नॉट ब्लाइंड अस टू द डाइवर्सिटी ऑफ म्यूजिक। दैट मींस वी शुड नॉट थिंक दैट म्यूजिक तो सभी जगह सेम है और म्यूजिक में डाइवर्सिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, बिकॉज समबडी माइट थिंक दैट हंगरी में भी हो रहा है, हाइटी में भी हो रहा है, यूएस में भी हो रहा है और ब्रिटेन में भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि म्यूजिक सेम है, ऐसा नहीं है। म्यूजिक में डाइवर्सिटी है, ठीक है, एंड थ्रू विच जस्टिस अपील्स स्पीक टू पीपल। और ये कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू नहीं है ये जो बताया गया है, ये सिर्फ एग्जांपल बताए गए हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ म्यूजिक म्यूजिकल स्टाइल्स दैट आर स्पीकिंग जस्टिस अराउंड। So passage talks about started with disco and punk, कि कैसे ये इनमें क्या elements थे and how they were trying to talk about the injustices and the social issues, social problems, and how then that was taken over by hip hop, and how hip hop has whatever the structure of hip hop reflects the reflects and contests the social marginalization, and how in different parts of the world through hip hop, people have expressed their uh, protest against the injustices. तो इस तरह से इस पैसेज को आप सम अप कर सकते हैं। Let's look at the question. So this passage, of course, was little more difficult to read compared to the second passage. So as we saw, second passage was the easiest. First, maybe you can rate it after that, and this was a little more challenging in terms of reading. Let's look at the questions. जरूरी नहीं है कि passage थोड़ा सा difficult to read or understand हो तो questions भी difficult. According to sociologist Tricia Rose, the struggle that was highlighted through hip hop can be termed. तो ये जो यहाँ पे त्रिशिया रोज ने जो बताया है कि hip hop universe as emerging from a post-industrial nightmare in which this and creative past into this unacknowledged came the interplay of technology, what the elements of this music was both this struggle she insists was not a final struggle. अब यहाँ पे इसका आंसर यहाँ मिलेगा. The struggle she insists was not a final futile gesture of victims of urban apocalypse, but was the formation of an alternatively communally forged identity by producers of a conscious take the back public spaces movement. तो ये एक इस तरीके का नहीं था कि हम सरेंडर कर रहे हैं, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, फ्यूटाइल जेस्चर है, तो जैसे कि यू आर गिविंग इन, इट वाज नॉट ओके। ये तो एक फॉर्मेशन था, एक कम्युनली फोर्ज आइडेंटिटी का, एक दूसरी आइडेंटिटी बनी जो कि टेक बैक द पब्लिक स्पेसेस मूवमेंट है उसका। इट वाज एन इनट्रांजिजेंट अनअपोलोजेटिक असर्शन ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू टेक अप पब्लिक स्पेस। तो इस तरह से बताया गया है कि ये क्या था। तो लेट्स लुक एट व्हिच ऑप्शन सजेस्ट द सेम थिंग। A success as it got the well-deserved recognition worldwide and helped in the promotion of welfare of the marginalized. तो ये देखो ये गलत है, उसने ये नहीं कहा कि this was a success, okay? उसने ये जरूर कहा कि it was not a futile attempt or it was not a failure, but ये नहीं कहा कि it was a success। और well-deserved recognition worldwide ऐसा भी कहीं नहीं बोला है कि इसके बेसिस पे जो marginalized लोग हैं, मतलब discriminated लोग हैं, उनका welfare होने लगा है, तो ये गलत है। This has not been mentioned that इस movement से what changes have been brought about in the society? Have the governments realized that they are being unfair to marginalized? Have they started working for the welfare of marginalized? No, ऐसा कहीं नहीं बताया इसमें passage में, and therefore this is totally wrong. A partial success because though it did not completely provide justice to the poor and marginalized, it persuaded the rich to donate money. ये तो देखो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, but here ये तो he is hallucinating और is पता नहीं इसने क्या खा लिया या पी लिया जो इस तरह की बातें कर रहा है, ऐसा कहीं पैसेज में नहीं लिखा हुआ है। It persuaded the rich to donate money for the causes of the underprivileged. ठीक है, this is totally wrong. This part is totally wrong, and therefore we can easily rule this out. A partial success because though the poor could not actually reclaim the original identity in the public space they lost, it created a new cultural identity for the poor that enabled them to reclaim the lost spaces through community involvement. This looks to be much better than the second answer. जैसा इन्होंने ये बताया कि it was not a final futile gesture but formation of alternative communally forged identity by producers of this take back the movement, and it was this assertion. So this comes very near to it. They could not actually reclaim but created a new identity. राइट, तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि उन्होंने एक अल्टरनेटिव कम्युनिटी फोर्ज आइडेंटिटी बना ली। तो दिस लुक्स ओके, विल कीप इट। अ ह्यूज फेलियर, नॉट एट ऑल, ये यही गलत हो गया ये, राइट। एज इट डिड नॉट हेल्प द पुअर बट रिच गॉट अवे विद प्लंडरिंग द लैंड रोड, ऐसा भी नहीं बताया गया, ठीक है। हाँ, वहां पे सबवे, वहां पे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन प्लंडरिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। लूट खसोट नहीं हो रही है, तो प्लंडरिंग मतलब लूट खसोट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। So not very difficult, right? ये हमें लग रहा था ये क्वेश्चन
जब हमने पढ़ा था और पैसेज के बाद में कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, लेकिन इन्होंने इसके ऑप्शन बाकी के इतने आसानी से एलिमिनेट करने वाले बता दिए that you could arrive at this. So I don't think you should have really got intimidated. कुछ लोग डर जाते हैं ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देख के कि ये तो नहीं होगा, छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है. This question turned out to be easier than expected. Which of the following can be inferred to be true regarding some styles of music during the period 1970 to 2010? Though certain music was wild and created a sense of chaos within the musical world, it helped to soothe the deindustrialization blues. So, क्या ये सही है? Which of the following can be inferred with to be true with regarding some styles of music during 1970 to 2010? तो 1970 to 2010 तक ये चल रहा था. Much of this हिप हॉप की बात ही हो रही है मोस्टली, ठीक है. यहाँ पे 1970s में डिस्को और पंक भी था. तो क्या ये दो certain music और wild and created a sense of chaos, it helped to soothe the deindustrialization blues. ठीक है, इसको हम रख लेते हैं, ठीक है. We may not totally reject it. We'll see. We'll evaluate with the other options. Certain music supported the prevalent political ideals which served as a platform for good governance and spread them across the commoners. This is totally wrong. ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि this became a platform for good governance. This was rather, it didn't support, but it contested. Okay, it went against. This music went against the prevalent political ideals. Right, that was the purpose of that music. So this is wrong. Certain music helped the poor oppose the government by providing ways to decry the ideals of the affluent. Decry means criticize. So, यहाँ पे ये कह रहा है कि certain music helped the poor oppose the government by providing ways to criticize the ideals of the affluent. तो ऐसा तो नहीं है कहीं पे कि गवर्नमेंट की को अपोज कर रहे हैं. देखो, गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर रहे हैं, वो अपने पब्लिक स्पेसेस को रिक्लेम करने के लिए कुछ अलग आइडेंटिटी बना रहे हैं. दिस डजंट मीन दैट दे आर opposing the government by providing ways to decry the ideals of the affluent. So this seems to again not be a good answer. Certain music nurtured a way of life and provided ideas of justice and identity to the general public with them stronger. Yes, the identity part यहाँ पे बहुत important है, right? तो अगर हम A और C, D को ना इवेलुएट करते हैं. A में कह रहा है दो certain music was wild and created a sense of chaos, it helped to soothe. देखो, soothe गलत वर्ड हो गया यहाँ पे. soothe नहीं है, rather उनको उन्होंने एक नई आइडेंटिटी फोर्स कर ली, ठीक है, और नए आइडियाज ऑफ जस्टिस लेके आ गए और उनसे वो लोग थोड़ा स्ट्रांगली बॉन्ड करने लगे. ठीक है, दे स्टार्टेड देन फीलिंग दैट बॉन्ड स्ट्रांगर एंड कम्युनली फोर्ड आइडेंटिटी, नई आइडेंटिटी बनने लग रहा है. तो डी लुक्स टू बी अ बेटर आंसर देन ए. So not a very good question, but anyway, D was better than A. So let's move on. According to the passage, what can be inferred about appropriating a cultural refuse for pleasure? अब ये जो cultural refuse for pleasure की बात की है त्रिशिया रोज ने यहाँ पे, कि ये जो यहाँ पे बताया गया है, into this unacknowledged war on poor and industrialized came the interplay of technologies, economics, what Rose describes as the practice for appropriating cultural refuse for pleasure. So इसमें ये जो cultural refuse for pleasure है, इसका क्या मतलब, ये पूछा जा रहा है आपसे. The struggle of people trying to hold on to a community identity was appropriated by hip hop in an effort to reclaim the lost societal ties and spaces. This looks still okay. ये जो community identity है, इसको hold करने की जो struggle थी, इसको appropriate कर लिया. Appropriate कर लिया मतलब छीन लिया एक तरह से hip hop ने, in an effort to reclaim the lost societal ties and spaces. तो जो lost spaces हैं और ties हैं, उनको reclaim करना है, वापस लेना है. So this looks okay. We will keep it. Poor people wanted to have a musical outlet for their opposition to the development of expressways. देखो, ये बहुत ही एक नैरो तरीका हो गया बोलने का. ये एक्सप्रेसवेज जो थे, ये तो एक सिर्फ representative example जैसे यूज किए गए. It doesn't mean that their problem was only the development of expressways. So therefore this becomes wrong. Hip hop propagators wanted to decry the injustice done to the poor by the interplay of technology, economic culture. This is wrong. This is literally taking it. This is एक चीज होती है metaphorically. तो ये जो cultural refuse of pleasure है, ये एक metaphor. तो ये आपने लिटरली ले लिया. ओके, यहाँ पे इन्होंने इसको लिटरली ले लिया. Hip hop propagators wanted to use culture as a means of decrying the injustice done on the poor by forces of technology and economy. No, they never wanted to use forces of technology and economy. So again, this is wrong. Correct answer is A. According to the passage, which of the following is the common feature of the two different forms of music, disco and punk? तो disco and punk के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में था, तो उनका क्या कॉमन फीचर है? Both genres of music were highly critical of social establishment and they did not dwell on social problems. ये गलत है, क्योंकि डिस्को जो है, देखिए डिस्को ने क्या किया था
कि डिस्को वाज represented turning away from political challenges, refusal to deal with social problems, right? So refusal to deal with social problems was a hallmark of disco. लेकिन पंक का नहीं है, पंक में ऐसा नहीं था, right? Punk was a howl of rage from working class youths who rejected and saw and rejected no uncertain terms the hypocrisy of social establishment, increasing inaccessibility of economic opportunity for these. तो इन्होंने नहीं किया था, राइट? हिप हॉप सॉरी पंक जो था, पंक ने सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर वेल किया था, डिस्को ने नहीं किया था, तो इसलिए ये आंसर गलत है. Disco and punk were both created from a common source, hip hop, और hip hop was created from disco and punk. ये उल्टा बता दिया इसलिए, इसलिए ये भी गलत. Both forms of music were synthesized as responses to problems plaguing the wealthy nations such as US and UK in the 1970s. ये बिल्कुल गलत है. सिर्फ यही दो नेशंस की बात की दी गई है. Both forms were synthesized as responses to problems plaguing the wealthy nations. ये नहीं है, ये 70s में इनको synthesize नहीं किया गया. Elements of both these musical responses were synthesized in hip hop, the most popular form of musical form for expression for protest worldwide in the following period. तो ये बाद की बात है, 70s में नहीं था. 70s में तो डिस्को और पंक ही थे, ये हिप हॉप तो बाद में आया, उसके बाद आया, तो इसलिए ये both were centralized responsible for plaguing the wealth of nation in the 1970s. Okay, so this says both forms were synthesized and responsible for problems plaguing us US and UK in the 70s. This looks in the following period. ठीक है, इसको रख लेते हैं because I am a little confused here. इसको हम अभी रखते हैं. Let's look at the option D. Both constituencies opposed the government's views and supported freedom of expression. ये तो बिल्कुल ही गलत है. ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो हमें C को ही रखना पड़ेगा. Though to my mind C is not a perfect answer because both forms were synthesized responsive to problems plaguing the wealthy nations in the 1970s. Okay, my mistake. Okay, disco and punk. Okay, he's not talking about hip hop. Fine. I think I maybe got a little distracted. So C is correct here. Okay, so as a distraction, okay, I went to hip hop. Okay, somehow I went the synthesis to hip hop. So forget that. C is the correct answer. Both were synthesized as responsible to problem plaguing the wealthy nations in the 1970s. This is okay. ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 70s में ना, हिप हॉप बाद में आया. Okay, so मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था. Hip hop came later, but these two were there in 1970s. So this is the correct answer. C is the correct answer. All right. So let's now move to the next passage. All right. Let's look at the last passage here. The first thing to acknowledge about diversity is that it can be difficult. In the US, where the dialogue of inclusion is relatively advanced, even the mention of the word diversity can lead to anxiety and conflict. Corporations spend billions of dollars to manage diversity, yet they still face discrimination lawsuits, and the leadership ranks of the business world remains predominantly white and male. तो यहाँ पर diversity की बात की जा रही है. तो diversity can be in many ways: gender diversity, it can be ethnic diversity, it can be economic diversity. So diversity can be there in many forms. तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि हमें acknowledge करना चाहिए कि diversity difficult है. और यूएस में जो है वो डाइवर्सिटी, इनफैक्ट इफ यू हैव हर्ड ऑफ अ टर्म DEI, डिवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन, दिस इज इक्विवेलेंट टू जैसे हम लोग बोलते हैं रिजर्वेशन इंडिया में, कि अलग अलग. तो हमारे यहाँ रिजर्वेशन है ऑन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ डिवर्सिटी ऑल्सो, लाइक वुमेन्स रिजर्वेशन की बात चल रही है पार्लियामेंट में एंड अदर प्लेसेस. इक्विटी एंड इंक्लूजन, दैट मीन्स कि सभी तरह का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसी कंपनी में, जेंडर वाइज, एथनिसिटी वाइज एंड अदर इन अदर सेंस. तो यूएस में डायलॉग ऑफ इंक्लूजन इज रिलेटिवली एडवांस्ड. इवन द मेंशन ऑफ वर्ड डाइवर्सिटी कैन लीड टू एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट. कॉर्पोरेशन स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू मैनेज डाइवर्सिटी, फिर भी उनको डिस्क्रिमिनेशन लॉसूट फेस करने पड़ते हैं. और लीडरशिप रैंक्स जो बिजनेस वर्ल्ड की है वो अभी भी प्रीडोमिनेटली वाइट और मेल है. देयरफॉर दिस इज नॉट डाइवर्स. तो हम डाइवर्सिटी की लाख बात कर लें, लेकिन अभी भी जो लीडरशिप है, that means the CEOs and the top leaders of most of the companies in the US are still white and male. That means diversity कहाँ हो? Diversity of expertise confers obvious benefits. You would not think of building a new car without engineers and quality control experts. But what about social diversity? What good comes from diversity of race, ethnicity, gender and sexual orientation? तो अब ये कह रहा है कि डाइवर्सिटी जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं. अब जैसे इंजीनियर्स और क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स के बिना तो आप कार नहीं बनाओगे.
लेकिन सोशल डाइवर्सिटी से क्या फायदा होगा? अगर आपके पास में अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग रेसेस के हैं, अलग अलग एथनिसिटी के हैं, जेंडर के हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हैं अलग अलग, तो उससे क्या फायदा होगा? सोशल डाइवर्सिटी कैन कॉज डिस्कम्फर्ट, रफर इंटरेक्शंस, लैक ऑफ ट्रस्ट इन जनरल परसीव्ड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ये सब चीजें हो सकती हैं उसके कारण, राइट? यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दीज पीपल, सपोज somebody is gay and you are not, so you may not feel comfortable. Somebody is different gender than you or different race than you, तो ये सब हो सकता है, रफर इंटरेक्शन हो सकते हैं, ट्रस्ट भी कम हो सकता है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन डाइवर्सिटी एनहांसेस क्रिएटिविटी। फायदा ये है कि डाइवर्सिटी से क्रिएटिविटी बढ़ती है। इट एनकरेजेस द सर्च फॉर नॉवल इन्फॉर्मेशन एंड पर्सपेक्टिव्स, लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डाइवर्सिटी कैन लीड टू अनफिल्टर्ड डिस्कवरीज एंड ब्रेक थ्रू इनोवेशन। तो ये एडवांटेज है उसके कि नए इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव मिलते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, और अनफिल्टर्ड मीन अनचेंज्ड डिस्कवरीज और ब्रेक थ्रू इनोवेशन मिल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के को रिकैप करते हैं। डाइवर्सिटी इज अ डिफिकल्ट टर्म, राइट? बहुत सारी कंपनी इतना पैसा स्पेंड करती है यूएस में, फिर भी उनके अगेंस्ट बहुत सारे लॉसूट्स होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, और अभी भी जो लीडरशिप है बिजनेस वर्ल्ड में वो वाइट और मेल है प्रीडोमिनेटली। डाइवर्सिटी से क्या फायदा होते हैं? बल्कि कई चीजें में तो डाइवर्सिटी कैन बिकम अ बैरियर, बट ही सेज नो, सोशल डाइवर्सिटी के कारण बहुत सारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, नए इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, पर्सपेक्टिव मिलती है, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। Business professors Christian Dezo of University of Maryland and David Ross studied the effect of gender diversity on the top firms in S&P Composite 500 list, 1500 list, a group designed to reflect overall US equity markets. First, they examined the size and gender composition of firms' top management teams from 1992 through 2006. Then they looked at financial performance of the firms. On average, female representation in top management led to an increase of $42 million in firm value. They also measured the firm's innovation intensity through ratio of R&D expenses to assets. Thus, companies that prioritize innovation saw greater financial gains when women are part of the leadership ranks. तो ये इन्होंने रिसर्च हुई है, स्टडी हुई है कि अलग अलग फर्म्स में जेंडर डाइवर्सिटी से क्या फर्क फायदा होता है। तो 1500 कंपनियों की लिस्ट थी, उसमें देखा गया कि जिन कंपनीज में जो 1992 से 2006 तक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी गई, तो जिन कंपनीज के फीमेल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा थी टॉप मैनेजमेंट में, उनकी फर्म वैल्यू इंक्रीज हुई। दैट मीन देयर वाज अ क्लियर एडवांटेज, और इनोवेशन भी वहां पे ज्यादा हुआ जहाँ पे विमेन लीडरशिप में थी। तो इस स्टडी से ये निकल के आया कि जिस कंपनीज में विमेन जो होती है लीडरशिप में होती हैं, पार्ट ऑफ लीडरशिप रैंक्स में होती हैं, वहां पे इनोवेशन भी ज्यादा होता है और वहां पे उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बेटर होती है कंपनीज की। रेशियल डाइवर्सिटी कैन डिलीवर द सेम बेनिफिट्स। तो ये तो जेंडर डाइवर्सिटी की बात हो गई। अब रेशियल डाइवर्सिटी की बात थी, वहां पे भी एक स्टडी हुई, उसमें पता लगा कि 177 इनोवेशन बेस्ड यूएस बैंक्स में इंक्रीज इन रेशियल डाइवर्सिटी वाज क्लियरली रिलेटेड टू एनहांस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अगर आपकी कंपनी में रेशियल डाइवर्सिटी है तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर है। तो इस तरह से ये स्टडीज में इस दोनों पैराग्राफ में जेंडर डाइवर्सिटी और रेशियल डाइवर्सिटी के एडवांटेजेस बताए गए। Diversity provokes thought. In 2004, Anthony, professor at Stanford, examined the influence of racial and opinion composition in small group discussions. Group members were asked to discuss a prevailing social issue, either child labor practice or death penalty, for 15 minutes. Researchers wrote dissenting opinions and had both black and white members deliver them to their groups. When a black person presented a dissenting perspective to a group of whites, the perspective was perceived as more novel and led to broader thinking and consideration of alternatives than when a white person introduced the same dissenting perspective. The lesson: when we hear dissent from someone who is different from us, it provokes more thought than when it comes from someone who looks like us. अभी इस स्टडी में क्या किया, इसमें इन्होंने स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस किए। वहां पे ग्रुप मेंबर को एक सोशल इशू जो था, चाहे तो चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस या डेथ पेनल्टी, डिस्कस करने को बोला गया, और उसके बाद में देखा गया कि कौन डिसेंटिंग ओपिनियंस, दैट मीन समबडी हु डिफर्ड फ्रॉम द अदर्स। तो अब किसी में ब्लैक मेंबर्स और व्हाइट मेंबर्स है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर किसी ब्लैक मेंबर का डिसेंटिंग ओपिनियन है, दैट मींस ही इज थिंकिंग डिफरेंटली फ्रॉम व्हाइट, और फिर अपनी जब वो ओपिनियन बता रहा था व्हाइट वाला, तो व्हाइट लोग उसको ज्यादा ध्यान से सुन रहे, बजाय इसके लिए अगर व्हाइट वाला एक डिसेंटिंग ओपिनियन लेके आया है और वो व्हाइट मेंबर्स को बता रहा है, तो वो इतने अच्छे से नहीं सुनते। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर हम डिसेंट मीन्स डिफरिंग ओपिनियन किसी दूसरे से सुनते हैं जो कि हमसे अलग है, तो हम ज्यादा थॉट उसको देते हैं रादर देन फ्रॉम समवन हू लुक्स लाइक अस। तो कई बार ऐसा होता है कि हम फैमिली में कोई कुछ बोलता है तो हम उसकी बात सुनते नहीं है ध्यान से, लेकिन अगर बाहर वाला कुछ बोलता है तो हम उसको ध्यान से सुनते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स ग्रुप में भी होता है कि अगर एक फ्रेंड आपको कुछ बता रहा है तो आप शायद उसकी बात ना सुनो, बिकॉज ही इज मोर लाइक यू, यू थिंक ही इज मोर लाइक यू, बट इफ समबडी हु इज डिफरेंट फ्रॉम यू टेल्स यू द सेम थिंग, देन यू मे बी मोर प्रोन टू लिसनिंग टू दैट पर्सन। सो डाइवर्सिटी का ये एडवांटेज है कि अगर कोई डिसेंटिंग ओपिनियन बताता है आपको, डाइवर्स जो आपसे पर्सन डिफरेंट है, तो आप उसको ज्यादा ध्यान से सुनते हो। Members of a homogeneous group rest somewhat assured that they will agree with one another and will understand one another's perspective and will easily come to a consensus.
But when members of a group notice that they are socially different from one another, they change their expectations. They anticipate differences of opinion and perspective. They assume they will need to work harder to come to a consensus. People work harder in diverse environment, both cognitively and socially, leading to better. तो अब इसका इन्होंने बताया कि इससे क्या उसका implication है कि अगर एक ग्रुप में आपके जैसे ही लोग हैं तो आप एक दूसरे से समझते हो and you will come to consensus very quickly. Whereas if you have in a group people who are different from you, then you will change your expectation. You will expect that there will be differences of opinion, and therefore the group will work harder to come to a consensus. तो इसलिए इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं डाइवर्स एनवायरनमेंट में ये बेटर आउटकम्स यील्ड करते हैं. This is how diversity works, by promoting hard work and creativity, by encouraging consideration of alternatives even before any personal interpersonal interaction takes place. So this is how diversity works. तो इस पैसेज के अंदर डाइवर्सिटी के बारे में अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं. First of all, they've talked about how racial and gender diversity leads to better financial performance and also better innovations. And then they talk about the difference of opinion, किस तरीके से better handle होते हैं in a diverse group, and that leads to more thinking and hard work to come to consensus, and therefore this is better. So let's go to the questions. What is the primary objective of the author in the passage? To conclude that diversity in corporations is not encouraged as of now, but it is very easy to do in the future. बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है. This is wrong on many counts. Very easily you can eliminate. To highlight the positive influence of diversity in different areas by providing empirical. Empirical means research-based, experiment-based, study-based. Something that can be shown empirically means by some studies, right? So study-based is empirical. तो इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्सिटी जो है एम्पेरिकल एविडेंस से बताई गई है, बिल्कुल बताई गई है. यहाँ पे ये देखिए आप, इस वाले में इन्होंने रिजल्ट स्टडी का बताया, इसमें बताया, इसमें बताया, राइट. सो देयरफॉर दिस कैप्चर्स इट क्वाइट वेल. विल कीप इट. टू प्रूव दैट सोशल डाइवर्सिटी कैन कॉज और लीड टू डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ये तो बिल्कुल ही गलत है. टू प्रूव दैट सोशल डाइवर्सिटी कैन कॉज और लीड टू डिफरेंसेस, प्रूव करने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं होगी. सो दिस इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज. To assert that top positions in business continue to be predominantly occupied by white males. This is not the main idea. ये फर्स्ट पैराग्राफ का आइडिया था कि अभी भी वहां पे टॉप पोजीशंस जो है वो occupied है white males के. तो this is not the primary objective of the author. This was just one part of the passage. So this is also wrong. Correct answer is B. According to the passage, what is the conclusion of the experiment done with the objective of examining the influence of racial composition in small group discussions? तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था कि ग्रुप कॉम्पोजिशन को अलग अलग रखने से क्या फायदा होता है, उसका क्या कंक्लूजन है? डिफरेंस इन ओपिनियन फ्रॉम समबडी डिफरेंट फ्रॉम अस enables that person to be accepted in our group. See, एक्सेप्टेंस ग्रुप में उसकी बात नहीं हो रही. बात ये हो रही है कि आप कंसेंसस पे कैसे आते हो, राइट? और आप दूसरों के जो डिफरिंग व्यू पॉइंट्स है उसको किस तरीके से लेते हो. दिस वाज नॉट अबाउट whether you are accepted in a group or not. So this is wrong. A dissenting opinion from someone different from us provokes more thought. Yes, अगर हमारे से अलग कोई हमें हमारे से डिसेंट कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है, डिसेंटिंग मींस डिसएग्री, तो हम उसको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, राइट. सो दिस लुक्स ओके. द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लैक पर्सन्स वाज कंसीडर्ड टू बी मोर नॉवेल. आई मीन दिस इज नॉट करेक्ट. ब्लैक पर्सन का पर्सपेक्टिव नॉवेल था, ये बिल्कुल ही गलत. अ टॉपिक वाज प्रेजेंटेड when presented by white person was considered something very important related to broader thinking. Again, this is totally wrong. इसमें ये बताया है कि जो अगर white person बैठे हुए हैं और black बैठे हुए हैं, तो अगर black person dissent करता है, मतलब disagree करता है, तो उसकी बात white लोग ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, और अगर white आदमी disagree करता है तो उसकी बात लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे. So these three are wrong and correct answer is B. Which of the following is the finding of the experiment conducted by professors of University of Maryland and Columbia University? तो मैरीलैंड और कोलंबिया वाले कहाँ गए हुए? मैरीलैंड और कोलंबिया भी यहाँ गए. तो उन्होंने कहा कि जो विमेन अगर लीडरशिप में हो तो आपके यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर होती है और इनोवेशन भी ज्यादा होता है. Women are considered lucky charms of an organization. What a ridiculous option they have given. A male and female engineer might have perspective as different from one another as engineer and physicist, and that is a good thing. Again, totally ridiculous option. Companies that design innovation as important observed greater financial success when women occupied the top echelons. Yes. So companies जो जिन्होंने innovation को important रखा था और उनकी greater financial success हुई जब women occupied top position. यहाँ पे बताया हुआ है. Female representation led to increase in this and innovation intensity. Company that prioritize innovation saw greater gains when women were part. तो ये है last sentence, इसी को उसने यहाँ पे rephrase करके बताया C में. So this C looks okay.
Companies that treated innovation as important, certain greater financial achievements, when women were denied top, ये totally wrong. Okay, women were accepted, होता तो सही हो जाता है. So correct answer is C. Which of the following is true according to the passage? A diverse environment will lead one to consider eclectic information. Eclectic means coming from different sources, wide variety. A diverse environment will lead one to consider eclectic information, opinions and perspective, and hard work may be needed to resolve differences in view of socially different persons. ये सही लग रहा है क्योंकि डाइवर्स एनवायरनमेंट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव आते हैं. ये यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में यही चीज बताई गई. Diversity jolts us into cognitive action in ways that homogeneity simply cannot. Jolts us into cognitive action that homogeneity simply cannot. ऐसा थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है. This is little extreme answer. People tend to work less in a socially diverse environment. बिल्कुल गलत है. People rather need to work hard to come to a consensus. वो भी बताना जरूरी है इसमें. Okay, just working more or working hard or working more or less is not the passage. What the passage is about. क्योंकि पैसेज में ये नहीं है कि वो आदमी हार्ड वर्क कर रहा है या कम वर्क कर रहा है. किस किस चीज के लिए हार्ड वर्क और वो नहीं कर रहा वो है. When disagreement comes from a socially different person, people are prompted to work less hard. उल्टा है, people are prompted to work harder. So this is also wrong. Correct answer is. So I hope the passages and the questions are clear to you. देखो इसमें से अगर हम स्ट्रैटेजी देखें तो पैसेज में we should have started with the second passage. That was easy. We should have gone to the fourth one, diversity, and then we could have come to the first. ठीक है. तो जो third passage है that should have been ignored and kept at the very end. अगर आपके पास टाइम है तो आप जाओ, because that needed a little bit of a understanding and careful reading, and questions also were not that straightforward. तो किसी को अगर 3 पैसेज जिसमें से करने होते तो उसे मैं इस ऑर्डर में रेकमेंड करता. That would have helped you complete. At least आप 2 और 4 कर लोगे तो आपके काफी कुछ क्लियर हो जाएगा. 2 और 4 easy. So these 2 were easy. This was moderate and this was difficult. Rather very difficult. All right, let's go to the VA part now. So this is a summary question. What exactly do advertisers get out of sponsoring public entertainment? Does it boost their sales? Does it enhance the company image in a way that's measurable at the bank? A question mark hangs over this issue. तो पब्लिक एंटरटेनमेंट को स्पॉन्सर करना है, जैसे टाटा आईपीएल आ गया, या वी हैव लॉट ऑफ दीज इवेंट्स व्हिच आर स्पॉन्सर्ड बाय कंपनीज. तो क्या उससे उनको कुछ फायदा मिलता है? क्या सेल्स बढ़ती हैं या कोई कंपनी की इमेज ऐसे बढ़ती है जो इस चीज मेजरेबल एट द बैंक मींस कि कुछ प्रॉफिट बढ़ते हैं? तो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है. अभी स्पॉन्सर्स आर एविडेंटली बिगिनिंग टू म्यूटिनी ऑन द बाउंटी. म्यूटिनी मींस दे वांट बिगिनिंग टू रिवोल्ट ऑन द बाउंटी. बाउंटी मींस एनी रिवॉर्ड. तो स्पॉन्सर्स जो हैं वो अब उन्हें लग रहा है कि हमें तो कोई फायदा होता नहीं है इससे. Volvo, the car people, has pulled out of international grandmaster tennis which they bankrolled for years. तो Volvo जो है उसने अपना स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर ली है ग्रैंडमास्टर टेनिस से. वर्जीनिया स्लिम सिगरेट जो है उसने अपनी एसोसिएशन विमेंस टेनिस से हटा दी है. प्रूडेंशियल इंश्योरेंस हैज टोल्ड वर्ल्ड क्रिकेट इट्स बीन फन बट दे गॉट टू गो. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्पॉन्सर्स हैं, जो जो एडवर्टाइजर्स हैं, या दैट मींस द कंपनीज विच स्पॉन्सर इवेंट्स हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इससे कुछ हमें फायदा ज्यादा होता नहीं है, and they have started pulling out of those sponsorships. So let's look at the options. Though advertisers always believe in long-term participation, they feel that sponsoring public entertainment does not help meet their goal, sales improvement. तो क्या ये कंक्लूसिव है? एक क्वेश्चन मार्क है अभी यहाँ पे कि क्या उनकी सेल्स इंप्रूव होती है, क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है. तो ये गलत है कि दे फील दैट स्पॉन्सरिंग एंटरटेनमेंट डज नॉट हेल्प मीट देयर गोल्स. ये क्वेश्चन मार्क है. तो उन्होंने अब अपना क्वेश्चन मार्क, जरूरी नहीं कि उनको आंसर मिल गया, बट स्टिल दे स्टार्टेड पुलिंग आउट ऑफ स्पॉन्सरशिप्स. So this is wrong. This is not correct. Agencies sponsoring public entertainment seems to have no evidence whether such sponsorship helped the brand and are moving away from it. Yes, this looks okay कि उन्हें एविडेंस नहीं मिली है एंड इसलिए वो मूविंग अवे कर रहे हैं. अब इसमें तो एग्जांपल भी दे दिया उसने. वोल्वो, वर्जीनिया स्लिम्स, प्रूडेंशियल हैव स्टॉप्ड स्पॉन्सरिंग. व्हाई ऐसा कुछ नहीं लिखा इसमें. So this is wrong. Sponsoring agencies strongly deplore means hate the fact that this is a waste of time, money and effort. ये बिल्कुल ही गलत है. इतना strong word hate यहाँ पे बिल्कुल गलत है. Correct answer is B. Easy question था. Right? This was easy, I would say. Okay. The Yorkist fashion used the symbol of the white rose from early in the conflict, but Lancastrian red rose.
This is not a independent statement. This is dependent statement. That means it cannot come in the beginning. It came into common use. It क्या चीज है? We don't know. So this is also dependent statement. See, जब हम पैरा जंबल करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट है, कौन से डिपेंडेंट है. That helps us to come to the opening statement. Scott based the name on a scene in William Shakespeare's play Henry VI Part 1 set in the gardens of Temple Church where a number of noblemen picked red and roses. Base the name. तो the name किस चीज का name? So this is also dependent. The name Wars of the Roses refers to heraldic badges associated with two royal houses, the White Rose of York and Red Rose of Lancaster. This looks to be the opening statement, independent statement है because this doesn't have any link with any of the previous statements. So the name Wars of the Roses refers to the heraldic badges. So Wars of the Roses क्या है? दो badge हैं, उसके बीच में जो है टसल है, तो दो रॉयल हाउस हैं, व्हाइट रोज है और रेड रोज, तो इनको ये रेफर करता है. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अब हम देखेंगे कि कहाँ जाए हम. कैन वी गो टू द यॉर्किस्ट फैशन use the symbol of white rose, but Lancastrian red rose was apparently introduced only after the victory. It came into common use in 19th century after the publication of Anne of Gerstein by Sir Walter Scott. यहाँ पे बोल रहा है Scott, तो यहाँ पे बोल रहा है Walter Scott. So obviously 2 has to come before 3, right? ये आधा नाम है, ये पूरा नाम है. So therefore second को 4 के बाद में हम 2 पे जा सकते हैं कि ये जो name है, it refers to this name. Okay, it came into use in 19th century after the publication of this by Sir Walter Scott. Then we can continue here with 3. Scott based the name on a scene in William Shakespeare play Henry VI Part 1 set in the garden of Temple Church where a number of noblemen pick red or white rose to show their loyalty to the Lancastrian or Yorkist fashion. तो यहाँ पे Yorkist fashion की बात हो रही है और Lancastrian fashion, तो वो यहाँ पे 3 में इंट्रोड्यूस हुए. Then we can go to 1. The Yorkist fashion uses the white rose symbol, but Lancastrian was apparently introduced only after this when it was combined with this. And then we end here with 1. So 4, 2, 3, 1. इसमें हमें 4 से स्टार्ट करना. देन ऑफ कोर्स वी मे हैव बीन कंफ्यूज्ड कि हम कहाँ जाएं. अब ये जो यॉर्किस्ट फैशन है और लैंकेस्ट्रियन ये है, ये इंट्रोड्यूस ही यहाँ पे हुए हैं 3rd में, तो इसलिए 1 जो है वो पहले नहीं आ सकता 3rd के, राइट. सो दैट्स हाउ वी विल गो टू 4, 2, 3, 1. Most people didn't care and just worried about keeping the lights on, and so it is with money. Throughout its history, money has alternated between these two sides, presenting either as a virtual system or accounting or a treasured thing, while retaining the essential characteristics of both. तो मनी के बारे में बताया कि 2 साइड है मनी के. एक तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, और दूसरा समथिंग ऑफ वैल्यू. तो मोस्ट पीपल डिडंट केयर, ये तो यहाँ 1 में तो आ ही नहीं सकता है. द डाइकोटमी इज बेसिकली दिस 2 साइड्स. So this is clearly followed by 2 is followed by 1. I mean 1 is followed by 2. It's also reflected in 2 main theories: charlatanism, which says that money represents a virtual debt to states, and Booleanism, which says boil down money. ठीक है. Most people didn't care. देखो एक important part होता है इसमें इस तरह के क्वेश्चन में ग्रामर का. ग्रामर मीन्स टेंसेस. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनी हैज ऑल्टरनेट प्रेजेंटेड ईदर एज दिस इज आल्सो रिफ्लेक्टेड, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. तो अब मोस्ट पीपल डिडंट केयर, अगर डजंट केयर होता तो फिर भी आ सकता था, बट डिडंट केयर दैट मींस दिस रेफर्स टू समथिंग इन द पास्ट, तो इसलिए ये यहाँ पे 2 में तो आने का सवाल ही नहीं. मोस्ट इकोनॉमिक इग्नोर, सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस. इग्नोर द डिबेट एंड ट्रीट मनी एज एन इनर्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद नो स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ओन. अगेन कैन इट कम most people didn't care? No, most people don't care होता तो हम सोच सकते थे यहाँ. But most economists ignore, most people don't care, still okay. But most people didn't care, no way. This 3 is also out. The situation therefore resembles the old debate about whether light was a virtual wave. Now देखो past tense में चले गए हम यहाँ पे कि light was a virtual wave or a real particle. Eventually, quantum physicists came to the conclusion that light isn't a particle or a wave; it is both at the same time. तो quantum physicists कह रहे हैं कि ये दोनों है. Neither it is just a particle or just a wave, it is both. Similarly, money के बारे में भी है. Most people didn't care, just worried about keeping the lights on, and so it is with money. तो light, अब whether it is a particle or a wave or it is both, most people didn't care. लोगों को क्या करना, लाइट जलाओ और चलने दो अपना काम. और मनी के लिए भी वैसा ही कि whether वो ये A है या B है, people don't care. So this perfectly sums up this paragraph and would come in the end. So B is the right answer. तो हमको इसको करने के लिए apart from the logic, we also took the help of grammar here.
because it can be easily ruled out. 1 में तो आ ही नहीं सकता, और 2 और 3 में भी rule out हो गया because of this didn't care. So okay, why I mentioned this is because this makes it simpler कि आप इसको और भी तरीकों से एलिमिनेट कर सकते हो सेकंड और 3 में, बट दिस गेव मी अ वेरी सिंपल वे टू एलिमिनेट सेकंड एंड थर्ड कि यहाँ पे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो इसलिए 2 और 3 पे आने का तो कुछ. So let's take a look at this 20th question. However, in the course of 19th century, free market largely failed to deliver the development goods, proving it to be more adept at generating than distributing wealth. Meritocracy loomed large over Victorian capital. तो ये जो विक्टोरियन एरा थी, दैट वाज 1800 टू 1900, क्वीन विक्टोरिया जब थी ब्रिटेन में, तो मेरिटोक्रेसी उस टाइम पे लूम कर थी लार्ज. हाउएवर, अब ये इसका एक कॉन्ट्रास्ट बता रहा है. इन द कोर्स ऑफ 19th सेंचुरी फ्री मार्केट लार्जली फेल टू डिलीवर द डेवलपमेंटल गुड्स. तो फ्री मार्केट से जो डेवलपमेंट गुड्स है वो डिलीवर नहीं हुए, प्रूविंग इटसेल्फ टू बी मोर अडेप्टेड जनरेटिंग रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग. तो वेल्थ जनरेट हो रही थी लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही थी. एंड सो इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी स्टर्ड बाय बोथ पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल. तो इसलिए राइट, तो अब देखिए ये इसके पहले यहाँ पे 1 में आराम से आ सकता है, बिकॉज वी आर सेइंग 19th सेंचुरी में फ्री मार्केट जो था इससे वेल्थ जनरेट हो रही थी लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही थी. तो अर्ली डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में काफी इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए और कम्युनिज्म जो थी दैट अपील, एंड देयरफॉर इट गेव राइज टू डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्कूल्स दैट एम टू रिन्यू कैपिटल. ठीक है, और स्टेट्स ने जो थे गवर्नमेंट्स टुक ऑन मोर मच मोर एक्टिव रोल. सो दिस फिट्स इन वन में आराम से फिट हो जाएगा ये इमीडिएटली, क्योंकि अभी ये 19th सेंचुरी खत्म हो गई है, 20th सेंचुरी शुरू हो गई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया है विथ यूरोप, फिर नए नए वर्ल्ड बैंक आ गया है, ये सब आ गए हैं. तो ऑब्वियसली इसके बाद क्रोनोलॉजी से इसको हम आराम से कर सकते हैं. वी कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ क्रोनोलॉजी हियर कि 19th सेंचुरी के बाद में 20th सेंचुरी, उसमें भी हम आगे बढ़ते गए, तो ये 1 में आराम से आके बैठ जाएगा. सो द आंसर हियर इज 1. Okay, in countries like Germany, as many as 15% of the population are foreigners. So this is of course an independent statement. Immigration has led to violent protest and general strike. Locals have been rounding up. This is not an independent statement. Many Europeans feel their homelands have too many immigrants. ये Europeans की बात हो रही है, यहाँ पे जर्मनी की बात हो रही है, ये भी independent statement है. But this is a dependent statement. तो अब इसमें हम या तो 1 से शुरू करें या फिर 3 से. तो 3 से नहीं करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि 3 में यूरोपियंस की बात हो रही है और 1 में उसका एग्जाम्पल जर्मनी में है. सो 3 से स्टार्ट कर देंगे. मेनी यूरोपियन फील देयर होमलैंड्स हैव टू मेनी इमिग्रेंट्स. तो ये जो चल रहा है आजकल यूरोप में और कई जगह पे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो दे फील दैट होमलैंड्स हैव टू मेनी इमिग्रेंट्स. तो उसका एग्जाम्पल दिया है इन कंट्रीज लाइक जर्मनी एज मेनी एज 15% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फॉरेनर्स. तो यहाँ पे 15% पॉपुलेशन फॉरेनर्स की. तो 3 के बाद में हम आराम से 1 पे आ सकते हैं. फिर उसके बाद में कहा जाएंगे बट ऑन मेयोट द स्मॉल फ्रेंच आइलैंड द शेयर इज मोर देन हाफ. तो यहाँ पे 15% है, यहाँ पे मोर देन हाफ, मोर देन 50%. तो ये 4 यहाँ पे आराम से आ जाएगा. And therefore, immigration has led to violent protests, general strike. Locals have begun rounding up suspected illegal. And island is the island. This island refers to this mayotte. So very easy question. Okay, this was very easy, and I think everybody should have got it correct. Okay, इसके पहले वाले, if you see, this was moderate, I would say. Okay, this was moderate. This was again, this was moderate, and this was again moderate. So you don't know moderate this. The concept of political personal rights and freedoms that guarantee our legal institutions is outdated. It is built on a model of free individual who enjoy the untouchable inner life. Now, though our thoughts can be invaded before they have been even developed in a way, perhaps this is nothing new. तो पर्सनल राइट और फ्रीडम जो है, जो हमारे लीगल इंस्टीट्यूशंस में जो गाइड करते हैं, वो आउटडेटेड है कह रहा है the concept. It is built on a model of free individual who enjoy an untouchable inner life. तो जो मॉडल है लीगल इंस्टीट्यूशन का वो ऐसा है कि हमारे इंडिविजुअल हैं, हम हमारी इनर लाइफ को कोई टच नहीं कर सकता. नाउ दो आवर थॉट्स कैन बी इन्वेडेड बिफोर दे हैव इवन बीन डेवलप्ड इन अ वे, but this is nothing new. Nobel Prize winning physicist Richard Feynman used to say that he thought with his notebook. Without a pen and pencil, a great deal of complex reflection and analysis would never have been possible. If the extended mind view is right, then even technologies such as those used in smartphone would merit recognition and protection as a part of essential toolkit. तो इसमें बेसिकली ये बताने की कोशिश की कि जो हमारा इंडिविजुअल का पर्सनल राइट और फ्रीडम है वो सिर्फ उसके माइंड तक ही लिमिटेड नहीं है. बिकॉज आई थिंक विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेंसिल ऑल्सो. सो पेन एंड पेंसिल ऑल्सो इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मी.
तो जैसे कि लीगल इसमें होता है कि आदमी का जो पर्सनल फ्रीडम है वो इन्क्रोच नहीं कर सकते हो. दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सेस द माइंड ऑफ अ पर्सन बिकॉज दैट इज प्योरली द पर्सन प्राइवेट थिंग. तो उसी तरह से ये कह रहे हैं कि जो पेन और पेपर होता है तो वो भी हमारे माइंड का ही एक्सटेंशन है, तो उसे भी हमें आदमी के पर्सनल उसमें रखना चाहिए फ्रीडम में. सिमिलरली जो स्मार्टफोन है, दीज डेज जो हम स्मार्टफोन है उसी के थ्रू काफी चीजें सोचते हैं करते हैं, तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ एसेंशियल टूल किट. दैट मीन दैट शुड ऑल्सो नॉट बी टेकन बाय, सपोज करो किसी की कोई भी क्रिमिनल है तो सबसे पहले उसका फोन पकड़ लेते हैं, राइट. उसके फोन को वो एक्सेस करते हैं, उसमें देखते हैं क्या व्हाट ऑल ही वाज डूइंग. तो एज पर दिस पैसेज ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का ये आउटडेटेड हो गया है. बिकॉज एज पर दिस ऑथर जो हमारे स्मार्टफोन्स और जो हमारी नोटबुक्स डायरीज हैं उसको भी पर्सनल फ्रीडम के थ्रू प्रोटेक्ट करना चाहिए. दैट मीन्स इट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइंड. therefore that cannot be taken away during the course of any investigation as per, ऐसा बोला नहीं उसने, but this is where he is leading to. So let's look at which option is correct here. While there is a legal protection for free individual rights and freedom, the laws have not evolved yet enough to protect those technologies which are just an extension of our mind. Now यहाँ पे those technologies, ठीक है, there is legal protection for a free individual's rights and freedoms. Laws have not evolved enough. Okay, ठीक है, इसको हम रख लेते हैं. Laws have not evolved enough to protect those technology which are just an extension. We'll keep it. Okay, this is okay to some extent, but not fully. So we'll keep it. Our smartphone is just an extension of our mind and hence merits protection and recognition just the same way as legal institutions protect personal rights and freedoms. यहाँ पे ये नहीं बोला है कि स्मार्टफोन जो है वो जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ माइंड है, लेकिन वो क्या करता है ये नहीं बताया इसमें. हाउ डज इट हेल्प, राइट. इट हेल्प्स अस थिंक. जैसे कि पेन और पेंसिल है, ग्रेट डील ऑफ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन वुड नेवर हैव बीन पॉसिबल विदाउट इट. तो ये इसमें नहीं बताया है कि व्हाई डज इट मेरिट द प्रोटेक्शन, राइट. इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द माइंड, इज ओके, बट व्हाई. तो इसलिए इसको बी को थोड़ा सा हम हटा देते हैं. The idea of free individual with a private inner life has been rendered obsolete by technology. These are just extension and there are no laws to protect them. ये गलत है. ये जो idea of a free individual has been rendered obsolete, this is wrong. This totally destroys it. Complex reflection is impossible without a technological toolkit acting as external mind, and legal system based on obsolete concept of individual freedom must be enhanced to protect the same. Yes, this is much better. Laws have not evolved enough is okay, but laws को हमें वो करना चाहिए, right. We should enhance the laws to protect the same. So D is a better way because it says complex reflection is impossible. ठीक है, ये भी बोल रहा है just an extension of the mind, but how is it an extension of the mind? ये भी स्पेसिफाई नहीं किया. तो जो प्रॉब्लम डी में थी वो वन में भी है, तो इसलिए वन को भी हटा देंगे हम और फोर्थ इज द राइट आंसर. Okay, let's look at the odd one out. As the disease progresses, symptoms may begin to interfere with daily activities. Nor do they understand the strength and weakness of existing treatment. Smartphone and other mobile devices worn or continuously by many offer a way to do so. Those researchers might understand better though if they were able to track the day-to-day symptoms. Researchers do not understand why people living with Parkinson's have good days or bad days. Nor do they understand the strength and weakness. देखो 5 से स्टार्ट करेंगे इसको. Researchers do not understand कि जिन लोगों को पार्किंसन डिजीज होती है उनके गुड डेज और बैड डेज कैसे होते हैं. किसी दिन तो वो ठीक रहते हैं और किसी दिन वो उनके लिए डेज बड़े खराब हो जाते हैं. तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा है और उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है. नॉट डू दे अंडरस्टैंड. सो दिस टू इज अ वेरी क्लियर एक्सटेंशन ऑफ 5. द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसंस. तो जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है इनकी ट्रीटमेंट की वो भी उनको समझ नहीं आती. नॉर इवन द अनमेट नीड्स ऑफ पीपल हु हैव द डिजीज. तो ये दोनों एक मैंडेटरी पेयर फॉर्म करते हैं. ठीक है, इसके बाद कहाँ जाएंगे हम. स्मार्टफोन्स or mobile devices can be continuously offer a way to do so. Do what? Do so means what? Do so. So is what? Those researchers might understand better though if they were able to track the day-to-day symptoms of a large number of people who suffer. तो अगर उनके day-to-day symptoms को track किया जाए तो fourth it looks like a logical extension from second. Those researchers जो है उनको अगर हम इनके जो symptoms हैं लोगों के जिनको पार्किंसन डिजीज है उनको ट्रैक करें डे टू डे सिम्टम्स, तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. और उसको कैसे कर सकते हैं. ये जो सो मैंने बोला यहाँ पे क्या है, दिस इज ट्रैकिंग द डे टू डे सिम्टम्स. तो स्मार्टफोन और अदर मोबाइल डिवाइसेस वोन और कैरीड ऑफर अ वे टू डू सो. तो इसके बाद में 3 आ जाएगा. तो यहाँ पे 1 जो है ये करेक्ट आंसर है. दिस इज द ऑड वन आउट. As the disease progresses, symptoms may begin to interfere with daily activity. This doesn't link with any of the sentences here. This is a totally different idea, and therefore this is the odd one.
All right, let's look at the last question here. Not for the first time, some energy firms fooled themselves into believing that newfangled technologies and funding mechanisms could let them defy law of financial guarantee. This is a negative statement. Where the energy firms have been fooled, and not for the first time. कि नई technology से fool हो गई. This year, new solar installations in America are expected to more than double. This is a positive statement. Last year, for the first time, world invested more in photovoltaic cells than in coal and gas power. This is also a positive statement. In some respect, this is the bumper era for solar energy. Plus, China which has more solar capacity plans to triple it. Positive statement. तो आप देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है. तो ऑब्वियसली दैट बिकम द ऑड वन आउट. इसका अरेंजमेंट कैसे होगा? तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ से. इन सम रिस्पेक्ट दिस इज द बम्पर एरा फॉर सोलर एनर्जी. दिस इज द जनरल स्टेटमेंट. तो अब उसका एग्जांपल दिया हुआ है, राइट. लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड इन्वेस्टेड मोर इन फोटोवोल्टिक सेल्स देन इन कोल एंड गैस पावर. तो 3 पे जा सकते हैं इसके बाद में. दिस ईयर, सो लास्ट ईयर के बाद में this year, new solar installations are expected to more than double. And China, which has more solar capacity, plans to triple it by the end of decade. ये future की बात है, right? So this is the past, this is the present, and this is the future. तो थोड़ा सा इसमें हमने chronology भी लगा दी. तो 4, 3, 2, 5 becomes the correct order, and 1 becomes the odd. All right, so that's it. That brings us to an end to this mock. This was, I would say, moderate question, not very difficult, easy to moderate. You could say this was also not very difficult, easy to moderate. And this was a difficult question. You can say this is a very difficult question. So in VA, if we see, we get more moderate, we get 1 very difficult questions, and in passages we get 3 very 3 easy to moderate passages and 1 difficult passage. Right. So that's it, and I hope this was useful. Thank you so much.